and in which direction we should move. We want your active participation in this AGM. So, before I start, first of all, I would like to thank you all, each and every member of Parivaar, each and every parent, each and every self-advocate, because my first tenure is going to be over today. Completed the 3 years as per the constitution of the Parivaar, and I thank you all for all your support and whatever we could achieve as a Parivaar NCPO during this last 3 years. So, whatever we have achieved, the credit goes to each and every member. And whatever we could not achieve, I owe the responsibility of that. And I assure that we will try our level best for continuous doing all these things so that we can address the worry what will happen to my child after me. There are many things which has happened during 3 years which we will definitely discuss during the coming time. But before that, as we have started a new thing in the AGM, we start the AGM with necrology. Last year we requested through our group that if there is any sad demises of any of our parent or the self-advocates, please share with us. But we did not receive anything. That's good that we did not receive. That means all our parents and self-advocates are in a good condition, good health. So that's really good. Only one thing, during the last year we lost, which is a very big loss for the Parivaar, as our first president, Dr. Shri J.P. Gadkari Sahab, was passed away. So today, through necrology, we are paying our homage to Gadkari Sahab and all others about whom we are not aware. But yes, we want to pay homage. And during last year itself, his wife and his son Neil has also passed away. So, first of all, let's Vipulav, I request you to please play the audio visual for the necrology. And I request all of you, please, for 2-3 minutes, keep your mobile phone on silent so that you can go through this. We are paying homage to all the departed souls who contributed to the Parivaar. So I request all of you, including Mahesh, everybody, Madhvi ji, I request, because we are going to run the necrology, I request that please keep silence and we all गेट बंद कर दो महेश. जो आना चाहता है अंदर आ जाए. And we are going to close the gates. विप्लव वाला गेट भी बंद कर दो. आप प्लीज बैठिए, प्लीज गोवा जी, प्लीज बैठिए. अभी रहने दीजिए, अभी वेट कर लीजिए. आफ्टर नेक्रोलॉजी वी विल डू दैट. सो नाउ विप्लव. आप उन महान भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहाँ आए हैं. आप विश्व इतिहास के सुनहरे क्षणों में आए हैं. यहाँ आपको अति प्राचीन एवं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा. ऐसा ज्ञान जिसकी आपको चिरकाल से प्रतीक्षा है. हजारों वर्षों से हमने भगवान की खोज की. हमने उसके लिए यज्ञ किए, तप किए, दान और पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं भी की
और वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य कर सकता है। विश्व एक परिवर्तन के छोर पर खड़ा है। हमने भगवान की विभिन्न पद्धतियों से पूजा की, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसके सत्य स्वरूप को पहचाने, केवल उस रूप में नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, उस स्वरूप में भी नहीं जिसमें हमने उसकी मूर्तियां बनाई और जिसमें हमने उसकी कल्पना की, बल्कि समय की आवश्यकता है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में पहचानने की। भगवान को अब उसी के द्वारा जानने की। ये सत्य ज्ञान केवल गुरुओं और बुद्धिमानों को या कुछ पुजारियों या पादरियों को ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण आत्मिक वत्सों को प्रदान कर रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि आप और हम सभी उसके बच्चे हैं, और वो है हमारा प्राणेश्वर, परम पिता, प्यारा परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव कहते हैं, मैं शिव हूं। यद्यपि तुमने मुझे कई नामों से याद किया है, परंतु शिव मेरा मंगलमय नाम है। मैं गुणों का सागर हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हारा परम पिता हूं। तुम हजारों वर्षों से मुझे भूलकर मुझसे बिछड़ गए थे। तुम बच्चे मुझे विश्व में सर्वत्र ढूंढ रहे थे। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में शीश झुका रहे थे। भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा कर रहे थे, परंतु मैं एक दिव्य ज्योति हूं। तुम आत्माओं की तरह, मैं अनंत शक्तियों का पुंज हूं। मेरा और तुम्हारा समान स्वरूप है, परंतु दोनों में एक महान अंतर है। मैं तुम्हारी तरह जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता। मैं अनादिकाल से परम पवित्र हूं, सर्वशक्तिमान हूं, शिव हूं। यही समय है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में जानने का। वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है। उसे ज्ञान के तीसरे चक्षु से ही देखा जा सकता है। आप आत्माएं भी ऐसी ही ज्योति स्वरूप हैं, शक्ति पुंज हैं, प्रकृतियों के मध्य में स्थित हैं। आप अलग हैं और आपका पार्ट अलग है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते, अपने आप को जानिए। इसके बिना आप जीवन यात्रा का सुख नहीं ले सकते। भगवान स्वयं हमारी पवित्रता व महानता को पुनः जागृत करने आया है। उसके बिना ये कार्य संभव नहीं। वो हमें भावी स्वर्ग का अधिकार देने आया है। उससे योग युक्त होने से ही इस धरा पर पुनः स्वर्ग आएगा। ऐसा स्वर्ग जिसमें सच्चा प्रेम होगा, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, जहां प्रकृति एवं मनुष्य में संपूर्ण अहिंसा होगी, जहां चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होगा। ऐसे स्वर्ग का वर्षा परम पिता शिव
हमारे लिए ही तो लाए हैं। भगवान कहते हैं, मेरा धाम इस स्थूल लोक से परे परम धाम है, जहां चारों ओर सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। वहीं तुम सभी आत्माओं का भी धाम है। वहीं से तुम सृष्टि के आदि में इस धरा पर आते हो। इसी को अनेकों धर्मों में कहा गया है। तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये परम सत्य है। अपनी देह को छोड़कर अशरीरी होकर तुम मेरे घर में मेरे पास आते हो। वहां केवल आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं। अब कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर दो। चिंतन करो कि तुम एक आत्मा हो, प्रकृति में विराजमान। अब मन बुद्धि से मेरी याद में मग्न हो जाओ। मुझसे शक्तियां प्राप्त करो। तुम मेरी अति प्रिय संतान हो। यही बाप और बच्चों का मिलन है। इससे ही तुम में पवित्रता आएगी और ये पवित्रता तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करेगी। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा। जाओ बच्चों, मेरे सभी बच्चों को कहो कि मुझसे योग युक्त हो, मुझे याद करो और स्वयं के आदि अनादि रूप को पहचानो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, तुम चाहे कैसे भी हो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हम कुछ क्षणों के लिए खड़े होकर हमारे जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। So let me share with all of you about the journey and what we could able to achieve last 3 years. Then we first go to the so I request our General Secretary Sudeep ji to read and approve the minutes of the 29th annual General Council meeting held on 14th February at State Youth Hostel, Kolkata. Thank you, Pankaj ji. I'll read out the minutes of the 29th Annual General Meeting Assembly for the year 23-24 held on 14th February 2025 from 2 p.m. onwards at Navpranjamana
State Youth Hostel, Lake Calcutta, West Bengal. So 29th and AGM of Parivar was held on 14th Feb Friday from 2 p.m. onwards at the State Youth Hostel, Satla, Calcutta. Dr. Pankaj Maru, National President Parivar, presided over the meeting and welcome members. Total of 115 members and affiliate member organizations were present. As the quorum was full, meeting was called in order by the President. Mr. Sudeep Goyal, General Secretary, read out the agenda which had been earlier circulated by email and WhatsApp to all members and requested the President to start with first point of agenda. The minutes of the meeting point-wise is appended as below. First was the necrology, a tribute to departed soul. Keeping up with our tradition to express gratitude and tribute to the personalities associated with Parivar who left for heavenly abode in the interim period from the last general meeting, an audio video necrology documentary was played in the hall capturing names and photos of past office bearers advocates who were part and parcel of our confederation across and contributed significantly in spreading parents movement. Audience paid emotional homage by 2 minutes silence followed by placing wreath on the cause of all the departments. Second agenda was the presidential address. Dr. Pankaj Maru welcomed the delegates and complimented them for their dedication and enthusiasm. He expressed his sincere gratitude to all the past presidents, current zonal vice presidents and secretaries and EC members for their contribution to Parivar cause. Gratitude was also offered to NPM host Parivar Bengal, ISI Youth Hostel for local logistics support, and specifically to NIPID for continued long-term association and patronage to parents. He apprised the General Council 2024, including subjects for which a separate agenda item is was placed in the AGM. And third point of AGM was our read and approve the minutes of the 28th AGM meeting held on 1st March 2024 at NIPID, Secunderabad. So Mr. Sudeep Kul GS read the minutes of the AGC held on 1st March 2024 of NIPID, Secunderabad, Telangana. Minutes were also simultaneously scrolled on the LCD screen for the benefit of the members. As there was no comment received from any of the present delegates, after a brief discussion, minutes approved by the following resolution. So resolution 1 was passed last year. That was the General Council adopts the minutes of the 28th General Body Assembly held on 1st March 2024. This was proposed by Mr. Jay Vittal and passed unanimously. Fourth agenda point was to receive and pass the annual report. So Parivar annual report for 23-24 was published in both Hindi and English, copies of which were distributed to all the members present in the AGC as well as couriered subsequently. Same was also uploaded on our website also. Members were taken on a quick overview tour of yearly activities. House was pleased with the layout, sequencing and content of annual report. Appreciation was recorded by the House for the excellent comprehensive model guidelines for the homes developed by Commander SNPU, sir. It was suggested to document tenure details of all the past president and office bearers in the further edition of annual report. General Assembly adopted the annual report for further dissemination among stakeholders, including government functionaries. Fifth point of agenda was to consider and approve the audit report and audited accounts for the financial year 23-24. So leave of absence was granted to Parivar Treasurer Dr. Divakar Bhai Shah. So in his absence, President Dr. Pankaj Maru presented the audit report as well as the income and expenditure account for the financial year 23-24, detailing the income heads and expenditure both in the general as well as the FCRA accounts. Thereafter, he explained the balance sheet. Couple of minor clarification was sought by members like Mr. Sikumaran. He asked about the CBM project balances, and Colonel Gautam asked about the earmarks funds, which were responded appropriately by Dr. Maru. The members expressed satisfaction on the way the transparency of accounts is maintained, and the following resolution was passed. Resolution 2 was passed in AGC last, that annual audited accounts for the financial year 23-24 are passed and adopted by the House unanimously. This was proposed by Colonel V.K. Gautam and seconded by Ms. Chetali Gami and approved unanimously. Sixth point agenda was that to appoint auditor for the years 24-25 and fix their remuneration. As the present CA, Messrs. Jain Sharad and Associate Chartered Accountant Ujjain has expressed their inability to continue due to other engagements, change of auditor was necessitated. Thus approved by our Executive Council earlier. So AGC was informed, and after discussion, following resolution was passed. So resolution 3 was passed, which was resolved that Parivar auditor Messrs. Chartered Accountant Ujjain B R and R are hereby changed
Messrs. Jain Pooja Dhakad and Associate Chartered Accountant Nagda, Madhya Pradesh be and are hereby appointed as auditor to Parivaar for the financial year 24-25. Dr. Pankaj Maru, President Parivaar B and are hereby authorized to get no objection certificate from previous auditor and finalize the audit fees for the new auditor on the same monetary terms and condition that of the previous auditor, and also provide them all the relevant accounts related documents as required for finalizing the audited statement of account, followed by the income tax and statutory returns filing for the financial year 24-25. Seventh point of the agenda was the brief on collaboration between Parivaar and Maulana Azad National Urdu University Manu in developing AR/VR based digital learning tools. So President informed the House about the virtual reality based assistive system for learning and assessment of persons with intellectual disability, which is being developed by the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, on the mandate provided by the client, its client, Ministry of Electricity. Architecture is being established at Manu with the aim to handle 25 lakhs real-time logins. NIPID, Javakil, and other reputed professionals in the field have been roped in to validate the high-quality AR/VR animation metaverse content being developed on 6,000 odd topics relevant to the growth and development of our PWIDs. Representatives from Parivaar are also nominated as expert committee members to review the content development and monitor guide them further. Many online and offline interaction with Manu project team were held in the reporting year, that was 23-24 last year. And to further enrich the content quality, a national consultative workshop of professional in our sector is proposed in the near future, which was done in this year, and this will be chaired by Dr. Pankaj Maru now. And General Assembly welcomed the same, and many members expressed their wish to contribute in this project further. Then the next agenda item was the brief on the project Hitarth, collaboration between Parivaar and we Voice of Special Able Persons, USA. So President, that was a new project. Now it's old, but that time it was a new project in the last AGC. So President Dr. Pankaj Maru informed the House about a new groundbreaking initiative taken by the Parivaar with the Voice of Special Able Person, voice led by Mr. Pranav Desai, was entered into with the aim of availing optimum hassle-free claims from the National Trust flagship scheme Niramaya. Under project Hitarth Sahayaks would be registered by the Parivaar NCPO throughout the country. Their role includes enrolling and renewing the PWIDs for the Niramaya health insurance scheme of the National Trust NT, facilitating claim submissions and assisting with the reimbursement processes. The Hitarth Sahayaks responsibilities also involve offering comprehensive guidance, handholding, and personalized support to ensure that PWIDs covered under National Trust disabilities can efficiently access the medical treatment and therapeutic benefits they acquire. This initiative aims to enhance their overall well-being and good health by streamlining the processes and protocols involved with the settlement of claims raised through the policy period. In lieu of these services and hand-holding, Hitarth Sahayak would receive monetary incentives which would be linked to the claim amounts. This will be fully funded by the Voice of and schemes would be administered fully by the Parivaar NCPO. For the first year, VoiceUp has committed minimum rupees 1 crore and more if needed to disburse as a cash incentives to Hitarth Sahayaks. All members uploaded this exciting news, which would be a game changer, ensuring greater reach and yielding desired benefits to our families of PWIDs. Next point, agenda number 9, was the status of FCRA income tax constitutional amendment and other statutory issues. So FCRA returns are being filed regularly in time and all compliances are in place. That was informed to the House. Second income tax, as related to income tax, case of previous notice issued by the IT department for recovery of an amount of 7.5 lakh rupees for not filing the statutory form 10B along with our ITR 3 years ago is being pursued vigorously at AO level. A favorable response from the department is expected very soon. We will be pleased to inform you that favorable response has been received, which will be shared by Dr. Pankaj Maru now. And other point was Parivaar Constitution Amendment process at Registrar of Society NCT of Delhi is also being pursued so as to get the amended constitution approved at the earliest. 10th number point of the last year agenda was that report on the RPMs held and current NPM. That was held in the Calcutta. So General Secretary informed the House that in the current financial year, 2 regional parents meet were conducted at Varanasi and Bhopal. All these events were highly successful with more than 200 parents and professional delegates attending each of the RPM.
A learned resource person and NIPID representative delivered quality knowledge content across this year chosen theme. Last year theme was the strategy and support mechanism towards empowered families. Live long one highlight of last year RPMs was that live long sessions by the eminent and seasoned psychologists addressed the issues raised by the parents and families, which were well received and assuaged their concern. Accounts were settled on the spot and logistic arrangements were appreciated by one and all. President also shared the statistics with regard to the current 30th NPM that was in Calcutta. An overwhelming response from the country saw more than 325 outstation delegates and local parents from Kolkata region getting registered themselves. NPM is scheduled to see packed house. A logistic arrangement made by the Parivaar Bengal team under the mentorship of Ayana Kundu ma'am and Shri Soman Upadhyay, with active on-ground legwork of Mrs. Chitali Gami, Mr. Arunashis Adhikari, Mr. Tapankar and their team mates, along with those from the NIPID, were widely appreciated by all the EC members. Detailed program schedule drawn having galaxy of resource person, a choice of technical sessions was also complemented. 10 number point was the Parivar membership subscription status and a snapshot of financial affairs. So it was brought by the president, that was brought last year also, and this year also we may deliberate on this topic, that it is disheartening to mention the status subscription amount basically that has not been received. So there are that time there were only 62 life members out of 312, and outstanding amount of subscription was rupees 70,61,800 rupees as on date of last AGM. He sought support from all the office bearers and members in mobilizing the resources and recovering the dues. He urged all the VPs to regularly review the outstanding details and pursued members in their region to pay in time through our website or other banking channels. He also informed that the e-commerce option is also available on website, and all activities of Parivaar NCPO are being regularly updated there. So whole house shared his sentiments. Colonel Gautam committed to support 10% of one-time membership fees, that is 10,000 rupees at present, of all members pertaining to any reason only. So any reasons के कोई भी parents अगर 10,000 रुपये one time membership fees देते हैं तो 10% कर्नल गौतम ने कहा कि हम support करेंगे, उसको commit किया. Mrs. Belbora ने mentioned that accessibility in any region is very poor and promises to activate the organizations there. Mr. Govind Mehra from Uttarakhand, he proposed to write letters to all the members once again. Similarly, Professor Koiti from Kerala, he advised to route the membership through the state federation. President added here that all details are available on the Parivar to earmark a sum of rupees 15,000 per zone for all the 6 zones for networking, connect and strengthening Parivar movement among members. Additionally, rupees 10,000 to be disbursed to the best achiever zone after the 6 monthly review. Proposal was seconded by Commander S.N. Bijur sir, and the House passed it unanimously. President further informed of the Confederation financial status and bank balances. That time funds closed as FD were having 34,85,000 beside earmark funds of rupees 5 lakhs rupees and 2,50,000 rupees for the national award, while total expenditure likely to be incurred during the year was around 15 lakhs, which actual expenditure will be told with the balance sheet audited figure, but that time it was projected that it will be around 15 lakhs. 11 number point agenda was the report by the Parivar representatives on the National Trust Board on the state of affairs. As none of the Parivar sponsored NT board members were present at the present AGC, this point was not taken up that time. And 12 number points was the brief on advocacy done with the stakeholders and roadmap for the future. So President appraised the committee about the multiple advocacy measures being taken with the different stakeholders. Current among these were listed as below. The regional parents meet sponsored by the NIPMED was conducted at Chennai. You know that the NIPID is sponsoring the RPM and NPM, but the first time NIPMED was also sponsored one of our RPM at Chennai, which was hosted by the Tamil Nadu Parent Association, which was very well received and revived the parents' movements there. Digital employment project at Jaipur and Disha curriculum at Nagda are some of the new initiatives will taken to empower PWIDDs. Parivar has been participating regularly at Divya Kala Mela and Purple Fest. During a meeting with Secretary DPWD, we raised many issues concerning our sector. Many more advocacy measures were taken during that year. These were the main highlights there. Next point agenda 13 was the announcement of Dr. Rita Peshwarya Menon, Srimati Premlata Peshwarya Menon National Award 2024 and BDMGS Memorial National Award 2024.
President further informed that AO has received total of 6 applications for the Peshawari and BMG awards, whose evaluation was done by a jury consisting of eminent. All applications were carefully vetted on the given parameters, followed by the awarding marks to these. Following nations were declared the awardees. So Dr. Rita Peshwari Menon National Award for the 2024 was given to Ashayam Parent Association Hyderabad, Telangana, and the BDMG S Memorial National Award was given declared to Nishakt Vyakti Abhivavak Sangh Jabalpur, Madhya Pradesh. All members present applauded the announcement and congratulated the winners. Then the reports, next agenda was the reports by Zonal Vice President, Secretaries and President State Federation, point number 14. So Vice Presidents from different zones presented their activity reports and apprised the houses of the happenings in their regions. Dr. Chirag Upadhyay covered West Zone and Gujarat in particular. Abhay Dubey ji briefed about the Central Zone. Jai Vittal ji told about the vocational training center being built at Udupi. Mrs. Lakshmi from Telangana and Dr. K.C. Nair from Kerala also spoke of the advocacy happening in their regions respectively. Last agenda of last AGM point number 15 was the open session for delegates, any other matter with the permission of the chair. So floor was open for the general discussion where following members spoke. So Commander Bijur shared that the post implementation of NEP National Education Policy 4-year integrated course in the special teachers training was being introduced at NIPID Secunderabad. A committee of senior special educators and experts from NIPID and NIPMED is being formed. So Parivaar should try to rope into our representative there. And it was also brought out that the curriculum does not include the caregiver. To get the best out of it, we should include more activities or start a 6-month program to include emergency care, nutrition and therapy, etc. in this course, or special course also can be started. Colonel Gautam informed that the regular inputs are, he noted that the regular inputs are not being received for the regular newsletter. Hence a format has been developed and being circulated to all as standard format that would facilitate compiling of data and further dissemination. Sri Jamir from Nagaland, he informed that through a program, he has undertaken a program that is called Northeast Connect. So he and his team has traveled extensively around 3,000 kilometers across the regions to network and bring vibrancy in the parent movement there. Whole house appreciated and complimented him. So President announced that for this Northeast Connect program, the Northeast region zone would receive rupees 15,000 as a special grant for the this initiative, and other zones must also follow this kind of networking. President also brought out that the RPD Act has been translated in Hindi and being distributed during the conference to all the NGOs. Dr. Sudeep Goel informed that an accessibility committee has been instituted by the Honorable Supreme Court of India to frame the minimum non-negotiable standards for the built environment. It was also brought out that we should draw benefit from the PM Daksh program. It covers 5 skills in all and shall make PWIDD self-reliant. And there being no other matters, the meeting was adjourned with a vote of thanks proposed by the General Secretary. So that was the agenda minutes of the last AGC, which was held in Calcutta on 14 March 2024. Thank you. I request the House if there is anything regarding this minutes, otherwise kindly approve the minutes of the meeting. Okay. ज्यादा बटन नहीं डालेंगे सर, ज्यादा बटन नहीं डालेंगे. Yes, please. One point, sir. I don't know whether I skipped or not. Was there any mention about a number of participants in the last NPM at Calcutta, both outside and the local? Was there in the minutes? It is mentioned. Okay, sir. Thank you. Yeah. Actually, we go by the registration because it's online. We are sending a Google link through which we are registering them. Total was 325. Yeah, that is through that only. Maybe with the exact number if you want, we have the exact data, but this number is from Google Forms which we sent and received. Almost 400. So local and this, because I remember many people, because we stopped like this year also. Now as of now
no spot registration can be done through the that thing, right? As of now, because Google form is valid up to certain date, but spot registration, correct? So that is the system. It was 400 something. I raised the question in the WhatsApp group, nobody answered last time. Okay. Actual data is 402 or something. Yeah, that is right. No, I think because this time also we got, I think 355, right? 355. All, Including local. yeah, this includes, I think 50 some 365. 365. Yeah, that's the right number because Wipro is monitoring all this. So, coming to the next agenda point, to receive and pass the annual report. So, let me tell you, this year, this is our annual report which we are going to unfold tomorrow officially with our distinguished guest. We have published in both Hindi and English. तो जिन्हें भी हिंदी में चाहिएगी उनके लिए हिंदी वर्जन है, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उनके लिए इंग्लिश वर्जन है. एंड लेट मी शेयर विथ यू कि इस बार अपार्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज़ वी हैव इंक्लूडेड मेनी आर्टिकल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सेल्फ एडवोकेसी, देन हितार्थ स्कीम, दिव्यांग सारथी, autism spectrum, one minute, teaching and supporting young students with autism, community-based inclusive development, disability rights in India, sustainable livelihood for adults, IDD, parents caregiver course, life beyond death, about self-advocacy, tribute to Commander JP Gadkari, along with audit report and our Parivaar membership form and the list of the Parivaar members. So this is the annual report, has already been printed and you will get it, but we want tomorrow officially unfolded by our distinguished guest. So I request all of you to please pass this annual report also. All the activities and everything is there inside the report. Thank you. Thank you. Now I request our treasurer, Dr. Divakar Bhai, to consider and approve the audit report from the house. ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इस किताब के अंदर भी दिया हुआ है और सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है. मेरी आपसे विनती है कि यदि आपका कोई प्रश्न नहीं हो तो उसे पास समझा जाए. Let me apprise you about the financial health of the Parivaar, because during this 3 years tenure, when we took over the charge, the FDR available as per the books on 31st March 23 was 26.63 lakhs. FDR as of now is 37 lakhs, an increase of rupees 10 lakhs. After all expenditures, so, and there is a bank balance of 4 lakhs available in the Parivaar general account. There is a bank balance of 9 lakhs of the award which we received for the self-advocacy project is available in FCRA account. So that way our financial health has, improving. It is, let me tell you, last Safi event which we conducted in Nagda without any support from the government. It has been conducted by our own resources and the sponsors. So with all the expenditure of the office and other things, there is an increase in the FDR of the Parivaar.
Let me tell you one more thing. In the last, when I took over the charge, we have started a lifetime membership. In lifetime membership, till now, 50 organizations has paid their lifetime subscription fee of 10,000 rupees, which has been kept as a corpus fund. So the 5 lakh rupees FD is as a corpus fund against this lifetime membership. So this is all about this thing. Specifically, if we see the income and expenditure of 24-25, then the total expenditure is 14,65,452 rupees, while the total inflow is 10,98,468. So we spent from the available fund from the past year is 3,66,982 rupees. So this is all about 24-25 and all the FDRs and all other things. So I request, and if there is any question, any query, please let me know. We are very concerned about the membership subscription. No, none is poor today. None is poor, and only 320 NGOs, only 50 of them. Lifetime. Lifetime. अगर annual की बात करें, then we have annual subscription received is only 31,000 we have received, only 28,500 we have received as an annual subscription. Only 19 of it. It means total 70 out of 320, only 70 have paid. Rest all are freedom fighters. I propose. The reason I'll give you one. I propose that anybody who has not subscribed and want to join the NPM should not be allowed to come. Let the host fill up the gap. And you can give your own opinion. And second reason is, with a strong reason which lies with us, and RPM have been cut down. That was the time when we can reinforce this. We started with the 1996, we started with the 2 RPM. Then because of Corona and many things happened, whatever the government policy, they are trying their best. Everybody trying their best. Anybody sitting on a chair, they try their best. There's no other thing. But we have to do something. Let's have their opinion. Because in the tomorrow and day after, we will not have a time to get the feedback. Sir, पहले होता था, whenever you want to register for the RPM, Yes. you want to give a copy of the subscription also. I remember back in Ranchi and all. अभी बीच में वो कट गया. You want to say the same thing, what I want to say. Thank you very much for reinforcing. What should we do? Over to you. Let the house decide. Should we do that? That without subscription fee, we should not allow anybody to participate in the RPM and the NPM. एकदम Yes, we have. I am sharing regularly with all my zonal vice president and zonal secretaries. How many organization has not subscribed? See, I given the data, only 50 ने life membership दिया और 19. 250 have not paid of the 320, a round figure. 250 have not paid. 250 not paid. It is not a matter of concern. Not a concern, matter of shame. As a president, you are sitting on a very delicate chair, he cannot speak loudly. But we as a member, yes. During my time, I removed 23 or 26 organizations, defunct organizations not to be member of the Parivaar. But we don't want to do that. The reason is there. The question is that if they are
They are registered in the Parivaar, but they are not. One more thing, let me bring out, because in the EC also we are raising this point regularly. But I'm very sorry to say that nobody is following it up. Nobody. Only the HO is following it up. And this money which we have received this time from few organizations, it is all because they want to become the EC member. And that is why, that's a next fact, let me share with everybody. Because you want to join the EC, you want to become a member of EC, then you are paying the subscription fee, which shows that what is the intention. Because it is the responsibility of the EC also, Executive Council also, that if there is any unpaid dues in their own zone, at least everybody should work. And you can see the minutes, in every minute, and how many times we have shared the complete list with all EC members. But not a single this thing has come up. Whatever we are receiving मेरा एक एचआर का बंदा है is through HO. नहीं उसमें, और उसका काम हमारे साथ एक बात और है कि जो लोग का है कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं लेकिन डिसेबिलिटी की वो फिर भी यदि एनपीएम में या आरपीएम में आते हैं कल परसों 2 दिन तो वो डेफिनेटली जो परिवार के जो ऑनेस्ट सदस्य मैं तो कहना चाहूँगा हैं वो उनके ऊपर ये लोग लोड बनते हैं, क्योंकि ईमानदारी से जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी जगह पे जो नहीं दे रहे हैं वो भी आके यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो मेरा तो निवेदन ये कि आज यदि आप कुछ निर्णय लें तो बेहतर है। और Whenever regional parent meet is there, anybody can join, whether they are a member of the AGM or not. With the technical point also, one cannot give an arbitrary decision that it will be done tomorrow onward. आज और कल, आज तो वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग थी और कल और शाम को अभी एजीएम हो रहा है और इलेक्शन होगा। कल 2 दिन यानी कल और परसों नेशनल पेरेंट मीट में जो बाहर से कई जगह से लोग आएंगे पेरेंट, it was being paid 20 years back also 500 to 1000 and today also being can you paid come the for same 2 thing. days? Value has been, rupee value has been devaluated. So anybody can join. Point here से चालू हो जाएगा यहाँ पे can be passed this इनॉग्रेशन वगैरह के बाद थोड़ा hidden point must be brought out. भानु जी, अब मैं गुजरात से आ रहा हूँ, कितने डिफॉल्टर होंगे हमारे वहाँ गुजरात में? स्टेइंग का देखेंगे, अंदाजे से बोलिए। दूसरा कुछ डिसीजन लेंगे। I don't think one out सभी का स्टे का अरेंजमेंट होता है जो बाहर से आते कोई हैं। होगा चिराग जी, डिफॉल्टर कोई होगा? हाँ जी, भानु जी आप बताइए। आप इस ढंग से निकलो कि डिफॉल्टर यहाँ पे स्टे करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा गर्म कपड़े चाहिए होंगे कि यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट, थोड़ा सा कंबल वंबल शायद उतना नहीं है, ऐसा कुछ है ना? गुजरात में कंबल वंबल का अरेंजमेंट है तो आप एक कंबल भी लेना, तो कंबल में ठंडक लगती है तो 2 कंबल हो जाएंगे, ठीक रहेगा। नहीं बर्डन तो ठीक है, कल का स्टे का भी हो जाएगा नहीं मैं भेज दूंगा ना कि और उसके बाद जो है परसों 2 दिन का रहेगा, मतलब परसों हाफ डे तक रहता है ज़्यादातर यूज़फुल। हाफ डे क्या वो शाम तक रहता है 4 बजे तक, उसके बाद 4 बजे खाली जाता है। तो सारा जितना आपको निचोड़ चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए, मतलब प्रैक्टिकली जब हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मैं अभी ध्यान आया कि ऐसा कर सकते हैं, कॉन्फेडरेशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो यहाँ पे एक्चुअली 1000 रुपये फीस लगती है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि लोकल है, ऑब्वियसली नंबर चाहिए और रहने की व्यवस्था तो कैसे ये करना है। हमारे को एक टेक्निकली देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा कि जो नंबर्स हैं वो भी चाहिए हमारे को, और नंबर्स अच्छे भी होने चाहिए, लाइक मतलब पेइंग मेंबर्स भी होने चाहिए। तो इसके अंदर में एक वे आउट लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, मे बी ये हो सकता है कि अपन नई मेंबरशिप एज ऑन टुडे, नई मेंबरशिप जो कि डिलीजेंट मेंबर्स हैं, अभी मैसेज तो कमी नहीं है ना, ये 320 जो भी है हमारे, तो इसमें से अगर नए मेंबर की बात करेंगे अपन तो शायद 30 से 40 पिछले 3-4 साल 5 साल में आए हैं नए मेंबर,
बाकी You will तो see बहुत lot of पुराने हैं, things, कई साल पुराने understanding हैं। इतनी तगड़ी और उनमें जाएगी से किसी भी भी अगर sector वैसे की, बात जो करें कि तो ठीक मैं है, 1500 आने वाले रुपये कोई 3-4 बड़ी महीने में बात नहीं है करता, आज की डेट में, वो 2 दिन लेकिन में हो जाएगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वो 1500 रुपये भी भारी पड़ते हैं। कोविड के टाइम में उनके प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, वो सब हो गया। अभी मुझे ध्यान अभी है वो आपकी ड्यू सब, क्योंकि बनते यहाँ बनते बातें काफ़ी इतनी कई अच्छी साल का बोली जाती पाइलअप हो हैं, गया। एक फिर एक वन चीज़ टाइम का 10,000 रुपये मज़ा आ देना जाता है। भारी पड़ता है, तो हम लोगों ने ये भी ऑफर किया कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो वन टाइम, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो ठीक है, नहीं हो रहा आगे। लेकिन हाँ, हाँ। अभी जो नए मेंबर्स या ट्रैवलिंग नई का भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन रिइंबर्समेंट जो अभी मिलता है, आई लेकिन वो आपको चल रही हैं कानपुर इंडिया से में, ना दिखा के वैसे लखनऊ बात से करें हम दिखाने लोग इसलिए अपने नहीं सेक्टर के देंगे अंदर वो में, लोग। अपनी जो तो मेंबर हम बनने हमें अपनी और के कंपनी लिए से करेंगे। एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो वो भी काफ़ी और है। ट्रैवलिंग का यहाँ सैकड़ों से में, बस से मिलता है हज़ारों में नहीं एक्चुअली बोलेंगे तो सैकड़ों में तो है ही ना। तो तो क्या आप ना, किससे क्यों आएंगे? ना बस हम से लोग आएंगे ना, ऐसा कैसे वे आउट आएंगे? निकाले कि ऑफ कोर्स आप लोग ही, मतलब हम लोग, मतलब अब सभी इसी हाँ, मेंबर्स बस और से, एजीएम हाँ, बस से मेंबर्स, ट्रेन अपने किसी एबीसी से भी मेंबर्स मिल जाएगा। अपने अपने कनेक्ट के साथ में एक एक दो दो ऑर्गेनाइजेशन जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, टिकट और रख जो लीजिएगा। हाँ, वन टाइम टाइम में बस या ट्रेन फीस जो का भी तो आना एक है, अलग बात है। अगर वन टिकट टाइम मतलब टिकट रखना 15,000 रुपये पड़ेगा। देंगे ज्वाइनिंग फीस या 1500 रुपये देंगे एनुअल फीस, वो एक अलग बात है। लेकिन हम्म, रेगुलर हो ठीक जाए ठीक और नए जुड़ते हैं परिवार के साथ में, नए जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो फिर वो शुरू में ठीक जोश भी रहेगा उनके अंदर में, और काफ़ी कुछ उनको मिलेगा भी आगे। तो फिर उससे धीरे धीरे वो नंबर आ जाए हमारे पास में, तो हम लोग ये जो डिफॉल्टर्स हैं इनको हम लोग वीड आउट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम लोग करेंगे तो एज ट्रैक जैसे बता रहे हैं कि 250 लोग हैं एक साथ ही, तो आज 320 में से अगर हम लोग 250 लोगों को सिर्फ ये बोल के मेंबरशिप से हटा देते हैं कि आपने फीस ड्यू नहीं की, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में? तो हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं रह जाएंगे ना। तो ये भी, इस पे भी सोचना जरूरी है। हाँ, तो इनएक्टिव है तो सर इसमें जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको जोड़िए ना, नए मेंबर्स को जोड़िए ना। हाँ, रिप्लेस करिए ना उनको। Numbers तो बहुत हैं. See, as per the data, recently we have seen National Trust 645 organizations. अभी देखा ना इलेक्शन में पूरा लिस्ट आया था 645 टोटल. DDRS स्कीम more than 300. तो organizations तो है. We see, but if there are non-parent which are working for us, parent and non-parent both we have to work together. But उसके लिए वही बात है कि हमारे जो जोनल मेंबर्स हैं वो आप लोग बता सकते हैं ना कि आपके स्टेट में कौन एक्टिव है जो परिवार के फोल्ड में नहीं है. Sir, from Kerala, we have to add something regarding this. Whether I can present it during deliberations or now. We'll discuss, but the concern is, let's decide this. I think in the NPM we can do that, not in the RPM. What you suggested? Only NPM, because NPM is always associated with AGC, so that can be done technically. Bijur sir? लीगल एस्पेक्ट बात करते हैं. वो NPM नहीं. हाँ, next time यही करेंगे. पंकज जी, एक बात आपने बोली कि इस बार क्योंकि ईसी का इलेक्शन है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ईसी को आने के लिए उन्होंने पे किया है. इसका मतलब पिछले साल सब वो लोग डिफॉल्टर थे. हाँ, तो ऐसे मेंबर को हम ईसी में क्यों आने दें? क्योंकि अभी फिर से इलेक्शन चला जाएगा और फिर से वो लोग बैठ जाएंगे, और जो बंदे हर टाइम देते रह रहे हैं, जैसे हम लोग लाइफ टाइम भरे हुए हैं, हम किस दोस्त के दोषी के भागी हो रहे हैं? तो एक मस्ट ये कर दीजिए, इसी वहीं से आएंगे जो लाइफ टाइम में. नहीं, लाइफ टाइम में नहीं होगा. होता है. नहीं, वो नहीं होगा जो कंटिन्यूअसली नहीं हम वो है. हाँ, प्रॉब्लम कुछ और है. मैं कहता हूँ बिफोर देयर आर इलेक्टेड हियर DPM जनरल सेक्रेटरी ऑफ द जोन अंडरटेकिंग लेनी चाहिए उससे. अंडरटेकिंग, आई हियर बाय गिव द टेक द रिस्पांसिबिलिटी दैट I'll make sure I'm making a recovery and make everybody active as I am. Something of that. नहीं सर, ये सिर्फ वीपी और वो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं ऐसे एजीसी कि जो आप लोग उनकी इंटेंशन समझ रहे हो कि 5 साल से या तो 3 साल से उन्होंने नहीं भरा, अचानक ईसी का, ये तो हमारे हर इलेक्शन का मुद्दा रहा है. मतलब जब भी इलेक्शन आ गया हम लोग सारे भड़के चले आते हैं,
तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करनी चाहिए। आपके पास वो लिस्ट होगी, मुझे तो अभी बोलना है कि इस बार की इसी से स्टार्ट कीजिए, उनको इसी में इलेक्ट होने ही नहीं दीजिए इस बार, जो पिछले बार से डिफॉल्ट रहे हैं और इस बार इसी के लिए फॉर्म भरे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली होने वाली है। 3 साल बाद फिर से यही होगा, जो वो लोग डिफॉल्टर होते जाएंगे, जो नए इसी में आना चाहेंगे वो लोग 5 साल के पैसा एक साथ दे के इसी में आ जाएंगे। वो भी करो, वो भी करो। अरे सुदीप जी, मैंने तो मजाक आपको पता नहीं, हम लोग मजाक में हम इनको बोले हैं सुदीप जी, इस बार हम लोग को प्रेसिडेंट के लिए कोई डैमी कैंडिडेट खड़े करने चाहिए थे, तब लोग ढेर के पैसे देते। मैडम आप जो कह रही है ना सर, 1 मिनट दुबे जी, मैडम को मैं जवाब दे दूं। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कैंडिडेट्स खड़े करो, बिल्कुल पक्का वोटिंग करवाओ, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे तो एनओसी लेना पड़ेगी, फीस भरना पड़ेगी एकदम, तब वो मतलब सबको पैसा दे के आएंगे। मेंबर अगर लाइफ टाइम भरते लेकिन मेरा तो निवेदन ये है अभी भी कि आपके एनपीएम के अंदर उन्हीं लोगों को आने दें जिन्होंने अपनी फीस भरी हो, अदरवाइज दे वुड नॉट बी अलाउड टू कम। हाँ जी, हाँ सर, इलेक्शन हर साल करो तो नहीं, वो तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं कर सकते। मेरा एक सुझाव है सर, हाँ, जो भी ईसी मेंबर आए वो हर साल कम से कम 5 जो है एनजीओ को परिवार से जोड़े, और वो भी पेरेंट्स हों। 5 नहीं, कम से कम 1 जोड़े तो सुनिए तो सर, मेरी बात पूरी मेरी बात पूरी नहीं हुई। पहले 5 साल मतलब पहली ईयर में जो है 5, दूसरे साल में 10, तीसरे साल में 15, ऐसे टोटल जो है। आपको डाटा देता हूँ, मैंने होमवर्क ये थोड़ा किया है। जो जब रजिस्टर होते हैं वो कॉर्पस फंड में पैसा जाता है ऑन एन एवरेज विद इन्फ्लेशन। यदि 320 ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा 32 लाख रुपया कॉर्पस में होना चाहिए, नंबर 1, जबकि 37 इन्होंने बोला है सब कुछ डालकर। नंबर 2, यदि 250 आज आउटस्टैंडिंग है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कम टू 25 लाख रुपीज। पुटिंग 25 लाख दिस रुपीज, it comes to about 70 to 80 lakh rupees. With interest, we can. These people are not being paid by Parivaar, Biplov and all that. This is being paid by SNE. Parent organization जो है, जो उसको चला रही है, शर्म के मारे वो वहां से पेमेंट कर रहे हैं। Why can't we by the people, for the people, of the people? Where are the of the people? Thank you very much. चिताली जी, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इस साल इसलिए नहीं हो सकता कि जो भी हमारा प्रोसेस हुआ है, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, एंड वंस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस विथ वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशन, इट कैन नॉट बी चेंज। बट यस, फॉर फ्यूचर वॉट करें ये because this is the apex body of this organization. Let's decide and pass a resolution so that आने वाले टाइम में कम से कम ये सारी स्थितियां ना हो। जहां तक सवाल डमी इलेक्शन का बोला सर ने या डमी कैंडिडेट का बोला, आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज आई बिलोंग्स टू लायंस क्लब ऑल्सो, और हम देखते हैं वहां पे फिर जो कैंडिडेट होगा वो खर्चा करेगा और हम और लोगों की आदतें खराब करेंगे। सो ये सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन। आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल, दिस ईयर मैंने लायंस का वाइस गवर्नर का इलेक्शन लड़ा, आई हैव नॉट स्पेंट अ सिंगल पाई। मेरे अपोजिट कैंडिडेट ने 65 लाख रुपीस खर्च किया और वो चुनाव हार गया। बट आई हैव कमिटेड दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। If you like me, if you like my work, give the vote. Otherwise, don't vote. But ये धीरे धीरे चीजें खराब करती है। We don't want this practice in परिवार। 1500 रुपए अगर हम नहीं दे सकते साल के, एक ऑर्गेनाइजेशन में 20-25 कैंडिडेट तो होते ही होंगे। So what is the contribution per person? Nothing. If we cannot pay 50 rupees per annum
per person, then so we need to think in that direction. आपको भी जो पोजीशन पे है उन्हें बताना होगा. It is very important. So let's हम यस सर. मैं शिवानी से पूछता हूँ, शिवानी आपकी प्रेस खराब है 1 महीने से, क्या कारण है उसके? आप 1 महीने से आपकी इलेक्ट्रिक कॉर्नर खराब है. पानी नहीं, आपके पैसे की कमी है, 1 मिनट, टाइम की कमी है, प्रोक्रास्टिनेशन, उसका आंसर है सुस्ती, कैजुअलनेस, नथिंग एल्स. Lack of money does not stop the work. Will that stop the work? Desire to give. पंजाब में कहावत है, दही दसेरा, लेने के लिए 10 साल का वेट अलग है, लेने का देने का अलग अलग वेट किया हुआ है. अब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. द विल टू गिव इज नॉट देयर. खाने का बिल है, मैंने सर्वे किया, जिसने बोला हमें वो, उन्होंने गाड़ी शिफ्ट नहीं किया है, पर उन्होंने अपने को पैसा मिलता 1000 रुपया 2000, वो सभी ने किया हुआ है. आ रहा है वो किया हुआ है, जहां देने हैं वो नहीं किया हुआ. And we are the one who the... Let's conclude this, sir. See, everyone wants to become a member of EC. Many people aspire to become member of EC, and among them, most of them also want to become office bearers. They want to become vice president, they want to become zonal secretary or zonal vice president. Now we should make this as a condition for any zonal vice president or zonal secretary, that or take a commitment from them that how much you will remind the members. 50% of the defaulters, if they are reminded at least twice or thrice, then they will pay off straight away. And now we have years back why we said that donation or lifetime subscription was that if these vice presidents and secretaries, they get after their members in their state, at least 50 to 80% organization. There are about 20-25% organizations who will say that we are not interested, why, what Parivaar is doing, what have you done for us, all those questions they will keep asking and they not pay. So मैं ये कहता हूँ, इस बार जब हम वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे या सेक्रेटरी बनाएंगे जोनल जोन से, तो हम उनसे एक कमिटमेंट लेंगे, रिटन कमिटमेंट ले लीजिए कि आप इतने लोग, आपके इसमें इतने लोग हैं जोन में, उनको आपने इतना रिड्यूस करना है, समथिंग लाइक दैट. नया भी टारगेट कीजिए, 2 या 3 या 4. नहीं, वो तो जैसे आएगा, सो दैट इज आल्सो ए सेंट्रल टीम का भी वो है. मेरे टाइम में एक एडवांटेज था, नंबर 1, जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरे अगेंस्ट 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी खड़े हुए थे. सो एवरीवन वाज एस्पायरिंग कि मुझे वोट मिले. सो almost I'll say 80% of Parivaar, because they were either voting for me or voting for somebody else. उन्होंने पूरा पे ऑफ कर दिया. Second time when I stood again the very strong candidate, again सबने at least wanted to come and vote, they paid. And थोड़ा सा हम फॉलो अप भी करते रहे, ऐसी बात नहीं है. So we had almost, if I remember correctly, we had about about 72 paid, and out of at least 50% wanted nikal do, we don't want to be part of the Parivaar. But as Sudeep ji said, that number is very important. When I go to the Secretary of Government of India and talk to him with authority, my number should be there behind me. मेरे पीछे 3 लाख भौतिक दिव्यांग हैं और मेरे साथ एटलीस्ट 1000 फैमिलीज हैं और मेरे साथ 350 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इट मेक्स लॉट ऑफ इफेक्ट. तो इसलिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिमूविंग एनीबडी फ्रॉम द. किसी ने जब भी वो बने मेंबर,
and they were keen to make some organization and also in their own standing within the organization. तो इसलिए आके वो बने हैं और हमें भी उसका फायदा हुआ कि हमने अपने नंबर इंक्रीज कर लिए. मैं अभी तक बहुत प्राउडली कहता हूं कि मेरे ज़माने में मैंने 110 मेंबर 6 साल में बनाए, विच इज़ ए फैक्ट. बट द फैक्ट इज उस 110 में से मे बी टुडे एटलीस्ट आज वो 50% उसमें से डिफॉल्ट हो गया होगा. सो इट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ the zonal secretary and zonal vice president. They have to work hard. From central office, you cannot pursue so much. There's one idea. Like in the morning, we were discussing about CSR projects. In the morning, we were discussing about CSR. That how many we should have separate team committee to do this. And CSR is certainly a big push for retaining those who are going out and adding new members. So, and there's one more issue, that pursuing, what you said, pursuing also. Persuasion, as you know, some of you know that I have created a team of telecallers with neurodivergent person. They are given a script and they speak. Pankaj Maruji and Sudeep ji might have experience with this because I have for central zone. So this job for the complete country, whole country I can do, persuasion. But it has to be big with some offer that have a lot many. With that strength we can take. That is why I am following you, that you become regular for our membership. And we will enforce lifetime membership. Why 15,000? For existing 10,000 is nothing. For new it is 15,000. 10,000 is nothing. They can do in case we club it with some this kind of offer. Which offer you are talking about? The project which we discussed in the morning, that we are forming a committee for CSR fund. CSR. He's connecting two dots. Just a Yeah. minute. Last year we tried because I was in charge of the committee for the award. People deposited 1,000, whatever the membership was. Only one person paid 10,000 rupees, and more difficult to pay. So why did other pay? Possibly the continuous persuasion, which I am ready to take that on. And when they say that makes effect, I think you, those who are from central zone, I think Abhayji might have got called, those everything them, and that gives a lot of effect. That when they work and earn, then possibly they might think that my son also can do it, or any person member, any member of their society can do it. सर आप 10,000 की बात करें, 1,500 नहीं देते. हाँ, तो परसुएशन की कमी है ना. कितनी बार हमने फ़ोन किया, मुझे लिस्ट मिल गई थी 2022 में व्हेन आई बिकेम एसी. बट इन द बिगिनिंग व्हेन देयर वाज अ जोश, मैंने कॉल किया सबको. उसके बाद जोश थोड़ा थोड़ा धीमे होता चला गया. लेकिन इनको तो कोई जोश की जरूरत नहीं, इनको तो बस काम दिया, काम करना है उनको मालूम है कितने लोगों को काम करना है. So, what we are going to resolve? And those speakers are from all part of country. Tamil, Telugu, Kannada speaking, everyone. Defaulter at how many times? 3 year, 4 year, 5 year, 6 year. So we can keep limit to it, na? Can't we keep a limit to it? Otherwise, defaulter cannot be the member of the Parivaar. वो तो नियम में है ना, वो तो रूल में है. बट वही तो बात अभी डिस्कशन यही चल रहा है कि क्या हम लोग करें, क्या उसको एनफोर्स करें, क्या रूल इज देयर. हाँ, एनफोर्स करें क्या. नहीं. First thing, I think we should pursue, then try enforcing. I have a thought. Counter thought. Yes, please. Counter thought is this, that while persuasion, आप जो कह रहे हैं, persuade करेंगे, that's absolutely necessary. But if Parivaar as a body needs to be taken seriously as somebody that comes like a wave. What आप जो कह रहे थे, सर बिजू सर, कि इतने organizations, इतने परिवार हैं, इतने हमारा force है. Then somewhere we have to put our foot down also and say that okay, ये आपका specification है, आपको 3 बार बोला था, please pay कर दीजिए. अब आप नहीं कर रहे हैं, now you've been deactivated for some time. Yes. Then come back, then do the persuasion. And whosoever is rejoined
Have to pay some penalty, some extra money to Status- be the part. Yeah, I got the point. Like financial status quo. Yeah. We can keep that organization under financial status quo and give them time that you are under financial status quo. You have to submit this thing, right? Right. And during the financial status quo, you cannot participate in any activities of the Parivaar. Parivaar. That we can. अभी अभी परिवार ने एक बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है जिसको प्रेसिडेंट आपको बताएंगे निरामया के लिए हितार्थ स्कीम एंड हितार्थ स्कीम इज सपोज टू अर्न मनी इवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हालांकि वो पैसा जाएगा इंडिविजुअल के अकाउंट में बट फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट तो उसके साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं कि जो आप यदि आपने पे नहीं हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने यदि पे नहीं किया तो हम हितार्थ नहीं देंगे वो तो हमारे हिस्से हमारे उसको डिफीट करेगा विल से जब हम हितार्थ में देंगे पैसा उसी टाइम हम उनको बोल दें भाई इसमें से हमें इतना पैसा वापस कर दो दैट वी कैन से Even non-member can do it now, sir. Even non-member organization can do it. Then I have a suggestion because I had. So, Ramaya, we cannot. जो डिफॉल्टर है उनका सारी लिस्ट यहीं पर डाल दीजिए जब ये हाउस आने से पहले उसको पता तो लगेगा और सबको हम पता लगेगा कि हाँ यही डिफॉल्टर है ये एक इंस्टॉल आएगा और वो अपने आप को सोचेगा Sir, morning I mentioned now regarding some mismatch in the accounting now. This time I took the case of 2 districts and I had to send the remittance of last 5 years and then it was solved. So there is a mismatch also. There may be, but this is not the case for all. There may be 1 or 2 or 3 cases. For last 2 years, Federation has collected from all the districts. Sir, we have not received. Because of this problem, we are not sending. No, sir, for one person you cannot do like this. No, I am. See, my point is, if we are talking of the organization, can for any dispute between among 2 people reflect on the organization? No, you are saying that because of that. No, that is one organization. But how many organizations you have in a fold? 14 Parivars and Mitram Society. See, we Out of 32, out of 32, Kerala No. 32. No. We will sit together. I will tell you because I have gone through all the details. Number 1, I will tell you everything because I myself is looking after all these things. But I just want to convey for all of you, where there is a state federation, I request that if there may be a dispute between 2 organizations, it's very common, even in the family also. But it should not reflect and we should not come up with this, that because of this we are not paying. Not because of that reason, sir. Because of this mismatch we are not sending. Not because of that reason. Because we took the. Because if you have the money received from the organization, you should pass it to the HO. Sir, mismatching is, he says, the mismatching is in accounting. Because you send an Excel sheet now, there is difference. That is why it is. See, that Excel sheet has been sent today, but that the outstanding is since how long? मेरा भी बंगाल फेडरेशन है हम एक चीज पूछना चाहते हैं केरला वाले से Anyway, I request, my point is only one. Even if there is a difference, we can talk each other, right? We can discuss because it is all banking system, right? Whatever you have transferred will be reflected in the bank. So there should not be any dispute. Maybe some manual error, maybe because the oversight or whatever. But
it must be there. That is one. So there is no dispute, number one, right? Because there are many times we are asking with the organization that we have this 10,000 rupees, we are not able to identify who has submitted this. There are the cases. So what I want to say, okay, we can see your case specifically, that is not a problem. Don't mistake it. Don't take it mistakenly, sir. Because of the We are already taken we are talking and one about by one we are accounting dispute, sir, not the other case. Okay. Can we handle this later individually? 1 minute. Yeah. As a state federation, I am asking you one question. Is Kerala Federation is taking all the money from for all the Yes. organization they are collecting and they are sending to Yes. HO? Why? Other federation we are not doing like that. Yes. They are sending HO directly and they are sending my money to us. And if it is it is our the policy, then it has to be for every state federation. No, it's not a policy, as I Because said. it's not a There policy, is then nowhere how in the Kerala people constitution is is of this now. thing? How they are doing this thing? It is happening in Bengal also in Sir? two committees. The problem is I don't know, but okay. No, I don't think. Yes, Seema ji, please. Sorry, I have. Chetali ji, Seema ji is saying something. Yeah. I have visited few organizations, and what I feel, our EC members are coming, having a background of professionals, right? Most of the EC members. So, as you said, there are few organizations talking about what are we gaining out of it. So, wherever I see there is a lack of knowledge, there's a lack of knowledge in management, there's lack of knowledge in program delivery, there's lack of knowledge in any of the areas, these EC members can be the contributors. So that is what the organization is going to get and have the sustainability. Rather than, it's not always a financial, right? So where the knowledge sharing has to be there. So there the EC members can stand, and even the experts can stand there and provide that support to the organization, where I felt even when I visited today. So there is a lack of thought. How should we proceed? How should we sustain? And how should we get our next successors? So this kind of support, if Parivaar provides to the organization to uplift themselves, how to put the proposals for CSR, right? So that kind of support will motivate them to join Parivaar and be there. Yeah, of course. And in the EC, Seema ji, let me tell you, we discussed this issue also, and Parivaar, what we are doing as a Parivaar, if we are getting some proposal under CSR, like in EC we have explained this, for a specific state we are sharing with them. If there is any support required from the HO or the other EC members, that still Parivaar is doing. We are definitely, because your suggestion is good, but we are not doing in a very organized manner. But yes, we are doing it, but yes, based on the inputs, we will definitely, because today only in the EC it has been, one resolution is in passed, whereby we are forming a committee to support for the fundings of the organizations under the chairmanship of Bijur sir. So yes, definitely it will support. So one point. यदि फेडरेशन ने जिम्मेवारी ली है कि all organization will pay through us on the first of April of the next year, an honest federation should pay whole money to the Parivaar and keep on collecting. If you take the responsibility, do the action also. It is not that घी मेरा और लस्सी तेरी, मक्खन मक्खन आपका, लस्सी लस्सी आपकी, दूसरे की. You take the responsibility to be taken as full in totality, and not that ki part time. Thank you very much. Nothing more from my side. Let me know what I said. नहीं बना दिए. आपने गुजरात के कितने मेंबर बना दिए डायरेक्ट?
गुजरात के हमारे 40% डिफॉल्टर हैं गुजरात के 40%, मुझे पता, मेरा डाटा मिल गया है। 23 में से 11 डिफॉल्टर हैं, उसका 40% बनता है। सारे आपके थ्रू बने हुए हैं, सारे हम मेंबर हैं। नहीं वो पहले उसका अता पता भी नहीं है कहीं। अरे समझे नहीं, मैंने अपने बाबा का नाम तो लगाऊंगा ना, सन ऑफ सो पासपोर्ट में। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लगता है। तो फिर डन डू गेट देम डिफंक्ट, उनको रिमूव कर दो ना। बीएम तो कभी मंत्र बने कर सकते, वो तो 11 और ऐड करके। हाँ जी, ये बहुत अच्छा जब 22 ऐड करके 11 रिमूव कर दो, ऐसे बोलो। 22 ऐड। What I feel after the complete discussion, we can work on 2 points. Number one, the financial status quo can be one of the solutions, whereby we can have a list of a financial status quo. Let's decide that for financial status quo, maximum, sir, 2 years. 3 years. 3 years. 3 years is 1,500, 3,000 only. So after 3,000, let's 2 years. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 years तक लगातार नहीं देगी, it will go under financial status quo. All are agree on this or not? Yes. Right? Number one. Number two, if any organization is going in a financial status quo, then the responsibility lies on the EC members of their respective zones. They will have to work for that. See, our objective is not to close the organization. Our objective is to strengthen them. What are their problem? Why they are not paying it? But we need to work hard as an EC member. It is not just for the sake of EC member. Please, ये सजावट की पोस्ट नहीं है. Please try to understand this. That is what I want to convey. So we are resolving this. So 2 years financial status quo, and if still we are not getting it, then is financial status quo not allowed in the NPM. Correct? Okay. So is it everybody is agree? Yeah. I would like to state that we are overlooking the 2 intents that's happening in our organization. One intent is charity model, another intent is dignity model. So those who want the charity model, they are defunct, and those who want the dignity model, they are paying. Yes. Agreed. Yes. 100%. Agreed. And So let's make one intent for the organization. no, that is why, see, because the system is going on, we want to improve the system. We cannot do it in one day. Yes, we are giving an opportunity as a law of natural justice. We are giving them the opportunity. Now the minutes will go to everybody that now the AGC has passed this. So please be aware now. We will send a list. Otherwise, you will be the financial status. So should we deny those who believe in charity models? No, we can't. We should not. Rather than we should give them opportunity to become the dignity model. Let them understand, because this charity model is coming from long back. We cannot change overnight. So that is why we want to give the opportunity. We are changing now. Yeah. It looks like Yeah, we are trying from this model to that model. out of 320, 250 are defunct. Matlab those who are not paid, that looks like 250 wants charity model. No, it may not be for everyone. There may be some reasons. The reason which we are not getting, because we want from the EC member, let come up with the reasons. Why it may be, so that is why this transaction period, casual. So give them an opportunity.
का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आज यदि ट्रम्प नीचे घुसा है वो 145 करोड़ की वजह से घुसा है। तो ट्रम्प जो है ना, he has stepped down because of 145 crore, and we are very productive. We have overpassed China. There is no way So- we are. The intent has to be same, otherwise we will remain divided. No, definitely it will come. We are moving towards that. But we cannot move or we cannot jump immediately. We have to give some time. We have some suggestions regarding our we have some suggestions. Yeah, we will take it. Definitely we will take it. पंकज जी वो भी सोचिए कि जो जिस बार इलेक्शन आएगा उस पर बढ़ के हम इसी मेंबर होंगे, उसका भी कुछ करना चाहिए, हाउस को सोचना चाहिए। Yeah, the financial, see, that is why I keep 2 years. Keeping in that, not 3 years. Try to understand. They will be under financial status quo. So they cannot come. Not only NPM, they cannot come in. That is why they will be under financial status quo. They cannot file the nomination. Sir, we are paying the money, registration fee correctly to all these years. When the accounts mismatched, we stop it. If the accounting is corrected, Yeah, definitely. Yeah, sure. Sure. No, that point is clear. He told me and now it's clear. Yeah. So thank you so much. This is the thing which we are going to do to improve the system. हाँ, क्योंकि जहाँ से मैंने कहानी शुरू करी थी वो कहानी तो फिर वहीं की वहीं है। तो मतलब जो अकाउंट्स आपके सामने रखे गए हैं उसे पास करें, आपकी यदि परमिशन हो तो। जी, अब अगला जो पॉइंट है वो है टू कंसिडर एंड अप्रूव द ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट फॉर द, वो तो हो गया। उसके बाद टू अपॉइंट ऑडिटर फॉर द ईयर 25-26 एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन। तो इसके अंदर सीए पूजा गाकड़ जी ने इस साल भी अपना ऑडिट किया था, उनका काम संतोषजनक था, और यदि आप सबकी मतलब परमिशन हो तो उन्हें फिर से नामित किया जाए अगले वर्ष के लिए। सर, जहाँ तक रेम्यूनरेशन का है मैडम, तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनको अपन एम्पावर करते हैं कि वो जैसा नक्की करें, नहीं भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या Let me tell you about CA Institute. कोई है CA यहाँ? नहीं, उसमें एक रूल है सर, पिछले वाले से कम नहीं दे सकते। कोई दूसरा आता है, यू कैन नॉट रिड्यूस द फी, दैट इज देयर एथिक्स। तो जो लास्ट ईयर फी दी है उससे कम करके तो नहीं दे सकते। दैट इज द इशू विच वी फेस। आई ट्राइड बट पुराना so they cannot reduce it. So then I said कि आप donation दे दो। See, that we can do. So I request this auditor and remuneration, we will, whatever we have paid last year, we will continue in that way. Thank you. थैंक यू वेरी मच। ट्रेजरर की ओर से तो बोल दूँ मैं। थैंक यू। Thank you so much. So the next agenda point is brief on collaboration between Parivaar and Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, in delivering AR, VR based digital learning tools. So, dear friends, as you all aware, in the last NPM also, we informed you about this project. This project is moving in a very well manner. We have conducted one program called Manthan, whereby we have invited 72 experts of this country. This Maulana Azad project funded by the Ministry of Electronics, whereby we are developing animated videos, AR, VR tools for, basically the objective is we have a very less rehab professionals in the country, and therefore the parents cannot send them either to the special school because it is not available, or it is very costly,
or a number of reasons. So with this Divyang Sarthi, that's the name of project, through which the parents can themselves at least teach their children about, activity of daily living, functional academics, and many more things. Excuse me, there is a call from registrar for tomorrow's program. I have to take it. सो दिव्यांग साथी प्रोजेक्ट का अपना मंथन के अंदर मुझे बता रहे हैं. होगा ना. पानी आ गया. अभिषेक पानी देना. अभिषेक पानी देना. Thank you. सॉरी. सो ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली आई वाज टेलिंग यू अबाउट, ये इसका एक मोबाइल ऐप भी होगा, वेबसाइट भी होगी. इस पे पेरेंट खुद, सेल्फ एडवोकेट्स, एनी इंस्टीट्यूशन एंड एनी प्रोफेशनल, ये चारों लोग जाके रजिस्टर कर सकते हैं. उसमें डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे एनिमेटेड वीडियोस हैं, थेरेपीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भी AR VR के सेंसरी गेम्स वगैरह सब होंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. इन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम परिवार, बिजुर सर and other people are contributing, and I request Bijur sir ki sir please you brief on that. तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अबाउट 2 years बैक. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी थॉट वी शुड बी डूइंग इज ADLs. तो बच्चों को ADL कैसे सिखाए जाएं, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस, जिसको हम क्लिप्स कह सकते हैं, वैसे बने. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 minutes टू अबाउट 8 minutes. एंड उसमें बहुत अच्छी टिप्स दी जा रही हैं फॉर न्यू यंगर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल्स, कि आप बच्चे को पर्टिकुलर ADL कैसे सिखा सकते हैं. Then while we are doing that, we also thought that there are certain very essential things which should be done, which is like fine motor, gross motor, उसको कैसे improve किया जाए. उसके लिए भी घर में बैठ के how a kind of therapy can be given to a child by the mother using the whatever locally available material, whether it is वहाँ पे दाल को चुने या फूल के कलर्स अप्रिशिएट करें, ऐसे वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव बीन आल्सो डन. अभी नाउ द मनु यूनिवर्सिटी इज टेकिंग अप ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी डोमेन. उसके अंदर हाउ वी मेक टीचिंग एड्स which can really aid a person who otherwise has learning disability. तो उसको भी अभी शुरू किया हुआ है. एंड बियॉन्ड दैट
their website और जो portal है उसमें it starts right from the, let's say, 3 years for a child where he has to learn ADLs, and it goes up to अभी जो नया निपिट दिशा जो अभी करिकुलम आया है, नेशनल करिकुलम जो आया है फॉर स्पेशल स्कूल्स ऑफ आईडी एंड ऑटिज्म, तो उसको भी रखेंगे। प्लस उसके अंदर for their assessment, right now we have got only ID tools. So as and when NIPIT develops autism tools or they develop for SLD, specific learning disability, उसके भी tools उसमें डाले जाएंगे ताकि a parent can even assess. Like 90% of the children who have got SLD today go totally undetected. वो बेचारे फेल होते रहते हैं 10th में, 8th में, कभी पास ही नहीं होते वो। So such people can be even given a very kind of preliminary assessment and be known. In fact, today even with the help of AI, many small startup companies have developed such aids, where even a 3-year-old child can be detected whether he is at risk of autism or not. So इसको भी हम बोलेंगे कि ऐसे ही टूल या बनू अपने आप बना ले, या at least they can collaborate with such small organizations and incorporate them. So it is going to be a very useful and kind of where the parents can independently start thinking about their child and give them some kind of therapy or therapeutic intervention, जो भी वो कर सकते हैं वो करें अपने अपने टाइम। इस पे पूरा एक प्रेजेंटेशन उनके डीन एनपीएम में कल करने वाले हैं। सो यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग कितना हो गया है। मनु की पूरी टीम कल आ रही है और एक अपना जो सेशन है इट इज़ ऑन दैट। सो डिटेल इंफॉर्मेशन यू विल रिसीव इन दैट कि किस तरह से हो, राइट। सो दिस इज अबाउट दिव्यांग सारथी। And there is another collaboration of Parivaar with Voice of SAP on हितार्थ scheme. I don't know how many of you are aware. कितने लोगों को पता है हितार्थ के बारे में? हाँ, there are few people who are not aware about हितार्थ. Okay. Now हितार्थ basically the Parivaar and the Voice of Special Able People USA. We signed an MOU whereby Voice of SAP is funding us to create a pool of paid social worker in the country for enrolling and settling of the claims under Niramay Health Insurance. So under this project what we are doing is कोई भी निरामय हेल्थ इंश्योरेंस का एक एनरोलमेंट, न्यू एनरोलमेंट इफ हितार्थ सहायक we are registering through organizations. The organizations of the Parivaar as well as non-Parivaar organizations also. If he is not registered with Parivaar, they can also register the Hitarth Sahayak. But the Sahayak will be registered by registered organizations only who are working in our sector. Once the registration is done, the Hitarth Sahayak name is uploaded, then that Hitarth Sahayak is doing the enrollment and then uploading the data. Data को upload करेगा कि उसने किसको enroll किया with the e-card of Niramay. On every one proper eligible card for enrollment in Hitarth Sahayak will get rupees 400 per card. Okay, then we are not stopping just for the card. We want कि parent का hand holding हो, then he will support the parent in getting the claims. Claim के अंदर there are certain slabs कि 6,000 करेगा तो कुछ पैसा है, 6,000 to 9,000, 9,000 to during a year he will get 1,450 rupees. So total Hitarth Sahayak can get 18,050 rupees for one enrollment and claim above rupees 20,000. So that's a huge number. And in last 3 quarters, Parivaar has already paid
35 lakhs rupees as an incentive to various. We have as of now almost 100 हितार्थ सहायक in our fold जो काम कर रहे हैं. Even there are few हितार्थ सहायक which received more than 2 lakhs in last quarter. It's a very good scheme. For this financial year, the Voice of SEP has announced a budget of $1 million, which is 8.5 crores. So I request all of you, इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल करिए. बीपीएल कैटेगरी का जब एनरोलमेंट होता है तो 250 रुपया, 40 रुपया नेशनल ट्रेन, so 150 plus 140, even then you will get 190 rupees. अगर वो 250 भी आप दें. So it's a very good scheme. आप सब लोग इसका फायदा उठाइए. आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बजट है हमारे पास. आप जितने लोगों को एनरोल करेंगे बहुत अच्छा है. एंड अभी विद द हेल्प ऑफ अनुराधा जी, उन्होंने मुझे उनकी इनर व्हील के नेशनल कन्वेंशन में इनवाइट किया था कोल्हापुर. उनकी नेशनल प्रेसिडेंट ने वहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था निरामय पे भी. और इनर व्हील के 55,000 मेंबर हैं पूरी कंट्री में, ऑल लेडीज मेंबर, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेडीज मेंबर्स क्लब. एंड दे कमिटेड टू सपोर्ट परिवार फॉर एनरोलिंग दिस पीपल बाय पेइंग द प्रीमियम ऑल्सो. और उनकी प्रेसिडेंट ने 50,000 का चेक परिवार को वहीं दिया फॉर स्टार्ट विथ 100 पीपल. तो अभी उनके साथ फर्दर और हम काम करेंगे. और जहाँ जहाँ इनर व्हील इंडिया में है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करें सो दैट यू कैन टाई अप लोकली विद देम एंड गेट देयर सपोर्ट. सो फर्स्ट तो मैं चाहूँगा कि अनुराधा जी के लिए हम जोरदार तालियां. एक अच्छा MOU. एंड आई ऑब्जर्व द मेंबर्स ऑफ इनर व्हील, दे आर विलिंग. इनर व्हील के लिए भी ताली. यस, सारी मेंबर्स इतनी विलिंग थी. उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वहाँ अनाउंस किया हम 100 का करेंगे, हम 50 का करेंगे. और मैंने उनसे कमिटमेंट लिया कि आप 1 ईयर के लिए नहीं, मिनिमम 3 इयर्स और 5 इयर्स का कमिटमेंट कीजिए. एंड आई रिक्वेस्टेड कि 55,000 हैं तो एक मेंबर अगर एक को करेगा तो 55,000 लोगों का निरामय हो सकता है जस्ट बाय पेइंग 500 रुपीज. तो ये एक बड़ा टाई अप है एंड वी विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो. तो आप, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, निरामय थ्रू इनर व्हील एंड हितार्थ सहायक through Voice of SEP, but all through Parivaar will definitely a game changer in our sector. So please take advantage of all these things and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल कीजिए. इसमें हमारा एक ये रहेगा कल का सेशन या कोई भी कैसे उसको निरामया के हितार्थ के बाद हितार्थ के साथ में करना. उस पोर्टल से करते हैं वो एक प्रैक्टिकल. हमारा जो एक बहुत एक्टिव हितार्थ सहायक है राघव, ही इज कमिंग. बाहर एक काउंटर भी उसके साथ हम कर रहे हैं और वो आपको 1-to-1 गाइड करेगा. ओके, मतलब ये सेशन नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली 2 दिन तक आप मतलब उससे बात कर सकते हैं. राघव से डिसाइड किया था तो एक डेमो देंगे वहाँ पर ऑनलाइन और आपके हाँ बिल्कुल. तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा. फिर हमारे विप्लव हैं और जो टीम है हमारी EO की वो भी साथ में. नहीं, उसमें देखिए क्या है कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं लाइक उसके अंदर में एक इशू आ जाता है कभी कभी कि बेनिफिशियरी ऑलरेडी अनलोड करके बोल के आ जाता है. तो वो बैक एंड के अंदर में IT के अंदर में थोड़ा सा कभी कभी इशू आ जाता है. हाँ, तो वो आप अगर इनको विप्लव को बताएंगे ना तो ये अपने IT की टीम से बात करेंगे और वो रिजोल्व हाथों हाथ होगा.
कभी थोड़ा सा कभी बग आ जाते हैं, वायरस आता है कुछ, उसकी वजह से थोड़ा सा लगा सॉफ्टवेयर की। अभिषेक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जैसे पंकज जी ने बताया कि लाखों रुपए, 2 लाख रुपए तक का भी किसी को हमने वो इंसेंटिव दिया है, 50,000 का दिया है, 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, काफ़ी किया है। लेकिन जो थोड़े से हैं वो सिस्टम में कभी भी ग्लिच आ जाते हैं तो वो बैकएंड के अंदर में उसको करवा देते हैं, उसको कोई कल कल परसों 2 दिन आपको लगातार डेमो रहेंगे वहाँ पर। हाँ, अपनी सुविधा से आप रिलैक्स होकर आप बाहर उनको Now the next agenda point is the status of FCRA, income tax, bank account and other statutories too. So all statutory compliances has been fulfilled and let me tell you one good news. Income tax का एक हमारे ऊपर जो liability निकली थी वो केस को हमारे कर्नाटक बैंगलोर के गुप्ता जी के साथ मिलकर that has been resolved and we got an order. उसको वेव ऑफ का ऑर्डर हमें मिल गया है, तो 7.5 लाख रुपए का हमारे ऊपर एक था। सो नाउ एवरीथिंग इज इन लाइन एंड 12 ATG का रिन्यूअल सबका था, वो भी हमने ऑल वी हैव फाइल्ड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, all the returns of FCRA, everything has been filed by the Parivaar. Now report on Safi National Convention. I request Sudeep ji, नागदा का साफी नेशनल। तो नागदा का जो 8th नेशनल कन्वेंशन साफी का हुआ था 19 और 20 जुलाई 2025 में हुआ था कुछ गार्डन में। तो 8 पेज की रिपोर्ट है, इसमें मेन पॉइंट में अपने की पॉइंट हम लोग शेयर करेंगे उसमें। ये परिवार NCPO ने किया था, मौलाना आज़ाद नेशनल मानस यूनिवर्सिटी उनके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, और स्नेह कुंज के अंदर में हुआ था। और स्नेह नागदा जो है ऑर्गेनाइजेशन, पंकज जी का ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको होस्ट किया था, कंडक्ट किया था। ये इस इवेंट के अंदर, कन्वेंशन के अंदर में 250 सेल्फ एडवोकेट और 175 मेंटर 18 स्टेट से जो आए थे इसके अंदर में, मेंटर्स, स्पोर्ट पेरेंट्स और 250 सेल्फ एडवोकेट, टोटल जो है 350 के करीब पार्टिसिपेशन डेलीगेट्स हुए थे इसके अंदर में। तो इट वॉज ए वेरी गुड इवेंट देयर। इसके अंदर में जो 19 जुलाई को इनोग्रेशन सेशन हुआ था हमारा, उसके अंदर में लैंप लाइटिंग हुआ था, उसका इनोग्रेशन सेशन चेयर बाय था अमित पाटले, जो हमारे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट ऑफ साफी हैं, नेशनल चेयर प्रेसिडेंट ऑफ साफी, उन्होंने इनोग्रेशन सेशन को चेयर किया। और उसके साथ में चीफ गेस्ट जो थे हमारे गोविंद राज जी थे, श्री गोविंद राज जी जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने डाइस को एज ए चीफ गेस्ट ग्रेस किया था। इसके अलावा हमारे जो डिग्निटरीज थे उसके अंदर में डॉक्टर माया बोरा, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं इंदौर से, वो आई थी, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज मारू प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी सुदीप गोयल, दिवाकर भाई शाह ट्रेजरार, सोनू मारू जो है हमारी परिवार साफी की मेंबर, इसी मेंबर, और चारवी नाटा जो है इसी मेंबर साफी की जयपुर से, वो भी उसके अंदर में वहाँ पर डाइस पे थी। अरुण गिरी जो है इसी मेंबर, और PS बोडे जी जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो भी डाइस के ऊपर थे। सुदीप गोयल सेक्रेटरी ने वेलकम किया डिग्निटरीज का, और साथ में वो जो है इस प्रेस्टीजियस नेशनल इवेंट को होस्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। अमित पाटले ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर में इसका वेलकम अगेन किया, और साफी की जर्नी के बारे में उन्होंने बताया अमित पाटले ने कि 2008 में एक छोटा सा ग्रुप से शुरू हुआ जो सफ़र है वो अभी आज पहुंच चुका है कि हम लोग 8वीं कन्वेंशन यहाँ पर नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया। और ये उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि ये NC जो है हर साल, अभी हम लोग 2 साल में एक बार करते हैं, एवरी ईयर इट शुड बी हेल्ड एनुअली रेदर देन बायएनुअली। और EC की जो मीटिंग्स हैं वो भी ऑफलाइन कंडक्ट की जाए, जिससे कि एंगेजमेंट रहे साफी के जो मेंबर्स हैं अपने, उनका यंग एडवोकेट्स हैं, सेल्फ एडवोकेट्स, उनका एंगेजमेंट लगातार बना रहे। तो इसलिए ऑफलाइन मीटिंग भी EC की जाए, और नेशनल कन्वेंशन जो है हर साल की जाए। डॉक्टर पंकज मारू ने जो है साफी का रोल के बारे में बताया कि क्या क्या होती है साफी की, और सोशल इंक्लूजन को एनहांस करने के लिए, लीडरशिप को एनहांस करने के लिए बताया। और इस तरह की जो कन्वेंशंस होती हैं वो सिर्फ गैदरिंग ही नहीं है, बल्कि एक पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन और एडवोकेसी एंड कलेक्टिव एक्शन टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव सोसाइटी। जो हमारे नेशनल विनर हैं साफी के PS बोडे जी, उन्होंने ये बताया कि साफी की जो एक बॉडी है वो इट्स द ओनली लीगल रजिस्टर्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, एक्सक्लूसिवली लेड बाय द पर्सन विद IEDs।
इंक्लूडिंग दोज विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल। जो नेशनल ट्रस्ट की 4 डिसेबिलिटी होती है उसकी एक्सक्लूसिवली एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि लीड की जाती है अपने PWDs के द्वारा, और टू बी वन वॉइस ऑफ एडवोकेसी रेडी टू सिक्योर एंड अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद IDDs। साफी जो है ऑपरेट्स इन फुल कंप्लायंस विद ऑल द लीगल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड इनकम टैक्स फाइलिंग। उन्होंने ये बताया बॉडी जी ने कि साफी जैसे हमारा परिवार है या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मेंबर्स के अपने खुद के होते हैं, तो जितनी भी लीगल कंप्लायंस करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करना, सोसाइटी रिटर्न फाइल करना, ATG 12A, वो सारा साफी भी करती है क्योंकि साफी इज रजिस्टर्ड बॉडी, तो वो सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। साफी को परिवार से लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। इसके बाद चीफ गेस्ट जो थे गोविंद राज जी, जो चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी में, उन्होंने बताया कि पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन तो इम्पोर्टेंट है और इसके लिए लेकिन सोसाइटी का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है कि पॉलिसी लेजिस्लेशन तो काफ़ी बने हुए हैं, हमारे RPD एक्ट भी बना हुआ है, नेशनल पॉलिसी भी बनी हुई है, लेकिन असली एम्पावरमेंट, ट्रू एम्पावरमेंट जो है पर्सन को तभी आएगा जब हमारे सोसाइटी एटीट्यूड के अंदर में, समाज की विचारधारा के अंदर में एक फंडामेंटल शिफ्ट होगा। तो वो उसके लिए हमें लगातार इस तरह के कार्यक्रम और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए। गोविंद राज जी ने ये भी हाईलाइट किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर में इमेंस पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटीज़ होती है, तरह के जो संस्थाएं हैं उनको उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रूव भी किया है। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्गली कंडेम किया यूज़ ऑफ डेरोगेटरी वर्ड जो पहले ज़माने के चले आ रहे हैं, लाइक मेंटली रिटार्डेड या हैंडीकैप्ड जो वर्ड्स हैं, इनको नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, गोविंद जी ने बताया और इसको डिस्कार्ड किया उन्होंने। और इस लैंग्वेज इज नॉट एन offensive only but also a punishable offense under the Prevention of Atrocities Act, ये भी उन्होंने इसमें ऐड किया था। सेशन कंक्लूड हुआ था, इसमें वोट ऑफ थैंक्स जो अरुण गिरी जो इसी मेंबर है साफी के, उन्होंने दिया। उन्होंने सभी सेल्फ एडवोकेट का, पेरेंट्स प्रोफेशनल्स का और मानव के ऑफिशियल्स का थैंक्स किया। मेंटर्स जो थे उनको फेलिसिटेट किया गया इसी इनॉग्रेशन सेशन के अंदर में NC के, जिन्होंने भी इतने साल में सेल्फ एडवोकेसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया है, जिसके अंदर में श्री अभय दुबे जी, श्रीमती पूनम चौधरी, सुमन टेलर जी, वर्धर हेगड़े मैडम, वीना डंकानी मैडम, पूजा संपत राज जी, महेश चंद्र राठौर और विप्लव चौहान, इन सभी को फेलिसिटेट किया गया था ओपनिंग सेशन के अंदर साफी के अंदर में फॉर द मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के मेंटरिंग के लिए। इसके अलावा ऑल मास्टर ट्रेनर और मेंटर्स जिन्होंने अच्छा प्ले किया था उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया अपने कार्य के लिए। इसके तुरंत बाद में एक जनरल असेंबली कंडक्ट हुई थी साफी की। जनरल असेंबली के अंदर में ओपनिंग हुआ, जिसके अंदर में अमित पाटले ने प्रिजाइड किया इसको, और संतोष कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट थे, आदित्य गुरनानी थे जॉइंट सेक्रेटरी, सोनू मारू चारवी में नाथा और मनप्रीत शर्मा ये जो इसी मेंबर थे साफी के, इन्होंने इसको डाइस को ग्रेस किया, जनरल असेंबली को कंडक्ट किया और डिग्निटरी को वेलकम किया। पाटले जी ने जो है सेल्फ एडवोकेट्स को एनकरेज किया कि इस तरह की सारी गतिविधियों में लगातार भाग लेते रहना चाहिए और सभी जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चैप्टर थे उनको कंसिस्टेंटली एडवोकेट करने के लिए भी अपने थीम को और अपनी बात को रखने के लिए भी उन्होंने एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट हुई इसके बाद में संतोष कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट है साफी के, उन्होंने PSBD जी के हेल्प मदद के साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 साल की एक साथ प्रेजेंट की, क्योंकि दो साल बाद ये साफी 3 साल बाद हो रही थी, तो 3 साल की रिपोर्ट एक साथ ही ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट की गई और असेंबली को बताया कि EC मीटिंग के अंदर में ये अप्रूव हो चुकी है, जो 16 जुलाई में EC मीटिंग हुई थी और उसके बाद में ऑफिशियल भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में शेयर किया जा चुकी है। तो उसके बाद सेल्फ एडवोकेट्स ने फोरम ने अपना इस प्रपोजल को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया द रेजोल्यूशन के थ्रू की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द लास्ट 3 years वर यूनानिमसली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली। उसके बाद एक्टिविटी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, तो अरुण गिरी जो इसी मेंबर थे उन्होंने एक्टिविटी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। उन्होंने ये बताया कि मिस्टर बोर्डे जो है उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो था जहाँ पर उन्होंने काफ़ी इश्यूज उठाए थे कि ID के जो पर्सन्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनको क्या क्या इलेक्शन के अंदर में समस्याएं आती हैं, ये उन्होंने वहाँ पर उठाया। इसके बाद में CM महाराष्ट्र को भी एक लेटर उन्होंने सबमिट किया रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर में चैलेंजेस जो थे और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशन थे वो भी उन्होंने शेयर किए थे। बुड्ढे जी ने आगे बताया कि असेंबली दौरान की एक भूटान की विजिट उन्होंने लास्ट ईयर किया था, तो उनको करीब 35 पेरेंट्स ऐसे मिले थे जिनसे मिलने का उनको मौका मिला, जो कि पेरेंट्स थे जिनके बच्चे जो थे
वो बच्चे और यंग एडल्ट्स विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थे और स्पेशल एजुकेटर भी थे उसके अंदर में। तो उनके 2 घंटे के इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने डिसेबिलिटी रिलेटेड सब एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में बात किया, इंडिया और भूटान के बीच में कैसे हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और ये लगातार उसके बाद में जारी भी है। उसके बाद उन्होंने बुड्ढे जी ने बताया कि 15 से 17 सितंबर 2025 में शारजा के अंदर में एक इंक्लूजन इंटरनेशनल का वर्ल्ड कांग्रेस हो रही है, 18th इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस। वहाँ पर सभी जो है सेल्फ एडवोकेट, फैमिलीज ऑर्गेनाइजेशन सब आएंगे और अपने एजुकेशन, लीगल कैपेसिटी, सपोर्ट सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि सभी सेल्फ एडवोकेट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें ऑनलाइन भाग लेना चाहिए। अगर ऑफलाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन तो जरूर भाग लेना चाहिए। एक वीडियो मैसेज भेजकर वो इसमें अपनी एंट्री भेज सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान ही जो है उन्होंने ये बात रखी थी और साफ़ी ने डिसाइड किया था कि साफ़ी जो है वो इंक्लूजन इंटरनेशनल की मेंबरशिप लेगा, और इंक्लूजन इंटरनेशनल की मेंबरशिप में फ़ीस लगती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साफ़ी रिक्वेस्ट करेगा कि हमारी फ़ीस को जो है वेव कर दिया जाए फ़ीस स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि हमारी लीगल बॉडी है तो इसलिए हम लोग फॉर्मली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंक्लूजन इंटरनेशनल को, अभी कोई डिसीजन इसमें हुआ नहीं है। उसके बाद जो सेल्फ एडवोकेट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया बुड्ढे जी को कि ईजी रीड जो है सेल्फ एडवोकेसी के ऊपर में बनाई जानी चाहिए, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फॉर्मेट के अंदर में आईडी बच्चों को मिलती है। थीम जो थी पिछली बार की कन्वेंशन की वो ये थी, स्पीकिंग अप एंड शेपिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ टुगेदर। तो प्रेसिडेंट ऑफ साफ़ी ने जो है इस सेशन का इनोग्रेट किया और अपने बारे में बात करने के लिए सबको इनवाइट किया कि अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस वो यहाँ पर शेयर करें अपने इसी थीम के ऊपर, विच वाज द स्पीकिंग अप एंड शेपिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ टुगेदर। सेवरल कई सेल्फ एडवोकेट थे जिन्होंने आगे आए और अपनी बात इंक्लूसिव के ऊपर में रखी और अपनी आवाज़ को उठाया कि किस तरह से हम लोग एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक समावेशी समाज हम लोग बना सकते हैं। सेल्फ एडवोकेट ने ये भी बताया कि हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस के अंदर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं और लोग उनके साथ में कैसे एंगेज रहते हैं। ये सेशन काफ़ी एंगेजिंग और जॉयफुल था और 2 घंटे से ज़्यादा चला। और इसके बाद में मतलब जो सभी सेल्फ एडवोकेट्स थे उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद में माधवी गुप्ता जी ने जो है उनको गिफ्ट भी दिए थे वहाँ पर इंडियन की तरफ से। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ड्राफ्ट किया गया, जिसके अंदर में जितने भी अपनी डिटर्मिनेशन की बात थी, कलेक्टिव एस्पिरेशंस और डिमांड जो थी हमारी सेल्फ ऐसे उसको उसमें चेकआउट किया गया, लिखा गया नागरिक डिक्लेरेशन के अंदर में। और ये जो है बाद में अगले दिन जब सेशन हुआ था हमारे सेकंड डे के अंदर में, डे 2 में, जिसमें ऑनरेबल गवर्नर कर्नाटक के ऑनरेबल गवर्नर सर आए थे, वहाँ पर उनको हैंड ओवर किया गया था। संतोष कुमार जी ने वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज किया और इस तरह से एजीएम जो थी हमारी डे 1 की खत्म हुई। उसके बाद पोस्ट लंच के बाद में डे 1 के अंदर में लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी, जिसके अंदर में इंटरेक्टिव सेशन हुए कई तरह के, जिसमें सोशल लिविंग, लीगल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट्स, इंक्लूसिव लिविंग, डिस्क्रिमिनेटरी अवेयरनेस के अंदर में भी काफ़ी सेशन वहाँ पर कंडक्ट किए गए और उसमें प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से हम लोग टीम वर्क के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में काम कर सकते हैं, ये किया गया। इवनिंग के अंदर में डे 1 के अंदर में एक कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि सेल्फ एडवोकेट्स ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। डे 2 जो 20 जुलाई को हुआ था उसमें मॉर्निंग के अंदर में पहला सेशन जो था रिकैप का था, डे 1 की एक्टिविटी को रिकैप किया गया। उसके बाद लाइफ स्किल एक्टिविटी जो है उसको उसमें करवाई गई। हर ग्रुप को एक चार्ट पेपर के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ में उनको प्रेजेंट करना था और सेल्फ एडवोकेट्स ने अपने अपने ग्रुप के अंदर में अलग अलग टॉपिक्स के अंदर में मेंटर्स की सहायता से अपनी बात को रखा। शेपिंग अप जो अपना थीम था, स्पीकिंग अप का जो थीम था उसको उन्होंने वहाँ पर रखा। और ये जो प्रेजेंटेशन था इसको एक कंपाइल किया गया नागरिक डिक्लेरेशन के साथ में और इसको ऑनरेबल गवर्नर साहब को प्रेजेंट किया गया। इस स्पेशल ओकेजन के अंदर में जो पास्ट प्रेसिडेंट हमारे जो थे, जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट थे परिवार के, डॉक्टर एच.टी. ढोलकिया जी, मिस्टर अजीम सैन जी एंड कर्नल वी.के. गौतम सर को ऑनर्ड किया गया, प्रेस्टिजियस परिवार रत्न अवार्ड से ऑनर किया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन एलिवेटिंग परिवार एनसीओ टू द न्यू हाइट्स। इसके अलावा पीएस बुड्ढे जी को, नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको परिवार गाइडिंग लाइट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ड्यूरिंग दैट कन्वेंशन डे 2 के अंदर में। ऑनरेबल गवर्नर जो इसके चीफ गेस्ट थे डे 2 के, उसमें थावरचंद जी गहलोत, उनको जो है रिसीव किया गया पंकज मारू जी और दूसरी डिग्निटरी के द्वारा। उसके बाद में डायस के ऊपर में मेजर बी.वी. राम कुमार जी जो निपिट के डायरेक्टर हैं वो मौजूद थे। उसके साथ में डॉक्टर मारू थे, अमित पाटले जी थे, सोनू मारू जो सेल्फ एडवोकेट हैं और इसी मेंबर है वो भी थे।
डॉक्टर मारू ने जो है गवर्नर का स्वागत किया और नेशनल कन्वेंशन के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ब्रीफली वहाँ पर एक ओवरव्यू दिया। गवर्नर सर ने जो अपनी गैदरिंग अपनी इनोवेशन स्पीच के अंदर में प्रेजेंशियल स्पीच के अंदर में ये बात बोली थावरचंद गहलोत जी ने कि जो प्रेजेंटेशंस किए गए हैं सेल्फ एडवोकेट्स के सब उन्होंने देखे अच्छे से और उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये अपने सेल्फ एडवोकेट्स ने कितने बढ़िया प्रेजेंटेशन जो हमारी थीम के अंदर में बनाए हैं और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो अपने इंडिविजुअल्स हैं इनके पास में एबिलिटी है कि अपनी थॉट्स को अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, समान अधिकार इनको मिलने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट्स को ये मालूम है कि फैमिली, सोसाइटी और नेशन का प्रस्पर नहीं कर सकता है, उन्नति नहीं कर सकता कोई भी समाज जब तक कि अंडर प्रिविलेज ग्रुप जो है, उपेक्षित समुदाय हमारा जो है, खास करके हमारे जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इग्नोर किया जाए। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि हर सेक्शन को हम लोग साफी इसके अंदर में प्रोग्रेस में इंक्लूड करें। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग राइट्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया। सिंपैथी से एम्पैथी की तरफ लाने के लिए उन्होंने कहा पिटी नहीं होनी है, हमारे को डिग्निटी पे बात करनी है। परिवार और साफी को फाइनली उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप जो है सेल्फ एडवोकेट्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर में ला रही हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी बातें कही थी कि हर इंडिविजुअल को राइट्स है डिसीजन अपना खुद का करने का। DPWD के द्वारा इसमें गारंटी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी दी गई है और सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका। सेल्फ एडवोकेट्स को पॉलिसी मेकिंग के अंदर में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी उन्होंने ब्रीफली टच किया कि क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और साफी के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया। नेशनल एंथम के साथ में गवर्नमेंट का एड्रेस जो है वो कंक्लूड हुआ था। उसके बाद नागदा डिक्लेरेशन जो था डिक्लेरेशन का वो रीड आउट किया गया हमारे द्वारा और प्रेजेंट किया गया अमित पाटले जी द्वारा, साफी प्रेसिडेंट द्वारा, और उसको डिक्लेरेशन के अंदर में उनको गवर्नर सर ने उसको आगे राम कुमार जी को हैंड ओवर कर दिया कि आप मिनिस्ट्री के अंदर इसको पहुंचा दीजिए और इसके ऊपर में काम कीजिएगा। राम कुमार जी ने तो उसको ओकेजन के ऊपर जो निपिट के डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस की और निपिट का जो सपोर्ट है उसको कंटिन्यूसली आगे जारी रखने के लिए कमिट किया और इससे फुली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने को कहा। दिव्यांग सारथी एक प्रोजेक्ट जो अपना चल रहा है उसके बारे में मानू की जो टीम आई थी उनमें से उन्होंने प्रेजेंट किया कि फीचर जो थे उसके अंदर में क्या क्या था, वो सारी बातें उन्होंने वहाँ पर लिखी, मतलब PPT के थ्रू प्रेजेंट किया और क्वेश्चन आंसर सेशन भी था। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है PWIDDs के लिए सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए आगे काम करेगा। एक वीडियो भी ADL ट्रेनिंग का एक सैम्पल वीडियो भी प्ले किया गया। फिर उसके बाद लंच के बाद में लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ की गई सेल्फ एडवोकेट्स की, जिसमें कि मेंटर्स थे, जिसमें कि उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स को प्रदर्शन किया। वैलिडिक्टरी सेशन शाम को हुआ, उसके अंदर में डॉक्टर मारू, डॉक्टर गोयल एंड मिस्टर बुड्डे थे। मिस्टर बुड्डे ने एक कंप्रिहेंसिव समरी प्रेजेंट की, उसके अंदर में डॉक्टर 2 दिन के NC की और डॉक्टर मारू ने वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज किया, एक्सप्रेसिंग हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, organizers, mentors and supporters who contributed to the success of the event. So that was a brief summary of the जी। It was a big change. जो लड़कियाँ साहब नहीं आते हैं, अजीम सहन नहीं आते, वो आए, पर ऐसी पूर्वक मैंने 4 प्रेजेंट किए। पहला प्रेजेंट था जो चीफ कमिश्नर दिल्ली से आए थे कि कौन से आदमी है जिनको 80 साल में 21 जो है PVC मिले हैं पूरे कंट्री में। हाईएस्ट अवार्ड जिसको सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है वो 21 सोल्जर का नाम, सोल्जर भी सिपाही से जनरल, कभी कभी सोल्जर बोला जाता है, अफसर को भी मिलिट्री में सोल्जर बोला जाता है। तो वो जो है वो दिए गए। उसके बाद हम लोगों ने किया क्या एशिया पैसिफिक में, इसमें 55 कंट्री हिस्सा लेते हैं। मैं भी गया, लड़कियाँ गया, विजयकांत, अभी विजयकांत यहाँ नहीं है तो लड़कियाँ साहब भी गए। उसका पूरा कोलाज बनाया, वो हमने परिवार ऑफिस को दिया ताकि उनको पता रहे क्या क्या हो रहा है। दिल्ली में क्या हुआ, उसमें गहलोत साहब भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान भी था, कई कंट्री थे उसमें, तो वो भी दिया। तीसरा जो है अभी जो सबसे पुरानी फाउंडेशन, सबसे पहले जब परिवार खड़ा हुआ 22 ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मध्य प्रदेश की 3 थी 22 में। Remember, today the highest number of NGOs affiliated to परिवार are महाराष्ट्र, नंबर 2 पर केरला है। तो वो मैं कहना चाहता हूँ, तो फिर इनको कुछ
वो क्या क्या किया उसने. Thank you very much. So this is not to be recorded, but you should know it. What all happened, because कोई भी यहाँ परिवार का आदमी यहाँ पर very rarely people were there because साफी का. Thank you. I hope आपने जो आप वाला है वो मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ. It's live now. मेंशन नहीं करना, बिजनेस इज सोशल. तो ये बताइए कि परिवार के ऑफिस में लगाया कि नहीं लगाया. थैंक यू. It's live now. It's live now. Not only recorded, it is live now. Everything is on record because it's live. So thank you so much, Sudeep ji, for such a comprehensive and detailed report. Thanks to Bude sir also for all this Safi movement. Now the next agenda point we already discussed in detail about the Parivaar membership subscription. So we are not going this. Report by Parivaar representative on National Trust Board on state of affairs and election of new board member. As you all know that National Trust Board election has been conducted, and I am very happy that today in this hall all the 3 board members from the Parivaar or the parent organizations are here. I request Chitali ji and Muskan ji from Muskan Seema ji. एक ही बात है, अभी हम कर रहे थे मुस्कान की, इसलिए सीमा जी प्लीज. So और so are 3 members. So बिल्कुल. And let me tell you the house on behalf of all of us that जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने चुना है, we definitely, मैं ये कोई assurance नहीं दे रहा हूँ, we commit. क्यों चिताली जी, सीमा जी, on your behalf, we are committing here in front of you that we will do everything, whatever the best is required from the National Trust for our sector. And let me share one very good thing with you. आपने देखा होगा ग्रुप में अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है. So I wrote a letter to the MediAssist for Niramaya on several points. And yesterday the CEO of MediAssist, their claim head, and the whole team conducted a meeting with me online, and they accepted that all the points raised by me is right, and they are removing all these things from their system, and henceforth they will not ask for any such things. And Chetali ji has given me one good information कि कल कैलकाटा में साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बताया कि एक क्लेम उसका कल पास हुआ. कल मेरे पास 100 क्लेम जो पास हुए कल वो लिस्ट आई, उसमें एक क्लेम वो भी है विदाउट साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के उस क्लेम को पास किया. दैट इज ऑल्सो देयर. सो वी हैव स्टार्टेड आवर वर्किंग विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन. एज ए इलेक्टेड बोर्ड मेंबर I have wrote that letter and I have made that complaint to IRDA also. So they have minuted all these points. They will not ask all these, nonsense questions कि डॉक्टर का लाइसेंस, डॉक्टर का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और मेडिकल रिस्टोर का लाइसेंस, हॉस्पिटल का टैरिफ. They were asking all these things. Not कि स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट ट्रांसफर ओटी के अंदर पूछ रहे थे कि हाउ ओटी कैन बी डन विदाउट एनेस्थीसिया. सो आई सेंट ऑल दिस थिंग्स एंड दे एक्सेप्टेड, एंड आई होप कि इस तरह से चीज और अच्छी. 2 more are coming tomorrow, right? One from voluntarily organization Suklal ji, and one from DPO, that is कपिल अग्रवाल. कल एक सेशन भी है जिसमें हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे between 10 to 11,
and we want to understand from you what is your expectation from the board members and what we think, what is our vision about the National Trust. So this is all 3 new board members और मुझे उम्मीद है कि इन सबके साथ हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और एक न्यूज़ दे दूं, या हमारे KLI वेस्ट बंगाल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत दिनों से उनका जो स्कीम चलता है वो पेंडिंग था। उन्होंने वो आने वाले थे आनंदगा, किसी कारणवश आज नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि उनका फरवरी और मार्च का जो We actually as a team working and we will do roadmap for 3 years. Yes, of Taking course. all your suggestions and everything together, and we know that all of Pankaj ji already create a WhatsApp group of all our National Trust board members, and we must assure you we will move there as a team of Parivaar, not as an individual. Yes. Whatever your vision, whatever you want, we will definitely convey those things to them. Thank you so much. रिन्यूअल जल्दी करा दीजिए भाई हमारा रिन्यूअल जी ने एक बहुत पावरफुल वर्ड कह दिया है और आपने हाँ कर दी दोनों ने। इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कमिटमेंट। मेरे को रामायण याद आ गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर क्लेम पास होई। पंकज जी ने कर दिखाया, साइकोलॉजिस्ट के पहले डिनाई होते थे, अभी साइकोलॉजिस्ट का बिल पास हुआ है। Brief on next agenda point, brief on advocacy done with the stakeholders including DPWD. Let me tell you, during the last year we did lot of advocacy work with department, with other government stakeholders as a Parivaar and also in the courts. 2-3 important चीजें बताऊंगा। परिवार का एक रिप्रेजेंटेशन पूरा लेकर हम लोग सेक्रेटरी से मिले थे और उसमें बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड टू वेदर इट्स अ यूडीआईडी कार्ड, रिलेटेड टू लाइफ लॉन्ग घरोंदा के बारे में, अदर मेनी थिंग्स विच वी शेयर्ड ऑल्सो इन द ग्रुप। उन सब पे बहुत डिटेल में उनके साथ डिस्कशन किया था, नेशनल ट्रस्ट के साथ किया था। इवन इफ यू रिमेंबर we raised the issue of decreasing the budget and we have taken up that matter to the PMO, and then after our this thing PMO intervened and the budget has been increased to 10 crore because 35 से 25 किया था. So that was also done by Parivaar. There are many such things through Parivaar we did. One important thing, we filed a case in the CCPD court for change of terminology from mental retardation to intellectual disability and inclusion of autism in the railway concession. CCPD has passed the order and that order is available and anybody can use that. And that's really a very good order for our sector. Then the pension case in the High Court, we won that to increase the pension, but it has to be implemented. The UDID case filed by our Parivaar Bengal chapter, and now that UDID portal is operative in Bengal also. So like that, many things has been done by the Parivaar and different chapters. So lot of advocacy we are continuously doing it, and whatever be the things in your mind, in your state, if you think that HO should take up that matter, please let us know. We will do that. कई सारी इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज होते हैं, सो वी आर ऑल्सो टेकिंग अप फ्रॉम परिवार HO एंड वी एश्योर यू दैट दैट विल कंटिन्यू. हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग एरिया के हैं. With the help of them, we will definitely take up all these issues and will resolve that. Next point is announcement of Dr. Rita Peshwaria Menon
Srimati Premlata Peshwaria National Award and BD MGS Memorial National Award, as well as a new award of Jeevani, Santosh Jeevani Award. I request Sudeep ji to give details on that. जैसा कि सभी हम लोग जानते ही हैं, परिवार एवरी ईयर जो है 2 नेशनल अवार्ड्स कन्फर करते हैं। एक अवार्ड जो है डीके मेनन जी ने शुरुआत की थी, जिसकी डॉक्टर गीता पेशवरिया मेनन अवार्ड, और उसके साथ में प्रेमलता पेशवरिया अवार्ड नाम था उसका। ये एक पेरेंट, जो बेस्ट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया जाता है हर साल, जिसने पिछले 1 साल के अंदर में कई इसके पैरामीटर्स बने हुए हमारे एक पूरी ओलंपिक्स, हम उन्हें भी हमारे गेस्ट से ऑनर करवाएंगे। सो कल के इनॉग्रल सेशन में ये सब होने वाला है। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इनिशियली हमारा इनॉग्रल 10 बजे था, जो आपके किट के एजेंडा में लिखा हुआ है, बट चूंकि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इन कर्नाटका, तो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका वाज सपोज टू केम टुडे, बट वो अब कल अर्ली मॉर्निंग बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज देयर, तो वो आज निकल नहीं पा रहे हैं, वो सुबह की फ्लाइट से आएंगे। So therefore we shifted the official our inaugural session to 11 AM, but 10 से 11 के बीच हमारा जो नेशनल ट्रस्ट बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ जो सेशन है उसको हमने प्रीपोन कर दिया, so that we can utilize the time. So 10 to 11 वो होगा, और 11 से हमारा शार्प इनॉग्रल सेशन शुरू हो जाएगा। So that is a slight change in the agenda which is there आपके किट में जो है। Now it's a time for the reports of zonal vice presidents, secretaries. So I request one by one our zonal vice presidents which are present here. कौन लीड करेगा? Who is coming first? अभय जी। Central zone, oh, northeast. Good. Mr. Zamir, please come on the dais. Our very active vice president from northeast. आपको ये बता दूं इस बार नॉर्थ ईस्ट से, अच्छा जमीर जी आप ही बता दो, how many people are coming from northeast in this NPM? Mic on, वो वाला, वो on, okay. Good evening to you all. Firstly, greetings from the 8 states of Northeast. Yes, so this time from Nagaland we are 13 of us. My other friends are coming this evening. They are almost about to reach, so I may take leave after my time gets over. So 13 from Nagaland and 2 from Mizoram. So that's a new entry, I may say. 4 from Arunachal Pradesh was supposed to come. They've booked a ticket fully, but because of the election duty that they got, they couldn't turn up. And Assam was also supposed to come. They said 3 of them will come, but somehow they couldn't come. So let me just give a brief report on the activities of the Northeast Zone. The Nagaland Parents Association for the Disabled, we call it as NAPAD, they came out with an initiative where the special children were invited to take dance lessons, dance cum fitness classes. So we have about, as of now, around 9 special children who takes part in the dance cum fitness classes. So it's been about 3 months since we have started. We have 2 classes in a week, and we used to make videos and upload the reels in the Instagram and other social medias, and we share videos also. So the response is very good.
just last 2 weeks back, they were invited to perform in the Nagaland Cooperative Conclave. So the conclave was for 3 days, and about 2,000 participants were there. So they were invited to take part. They performed one dance, and tomorrow and also day after tomorrow, if time permits, three special children of the dance group, we call it as the special squad. So they are going to perform during the cultural time also here. And because the Christmas season is coming, the Nagaland Parents Association came out with a greetings card. So in that greetings card, the card was painted individually by special children. So we pay 40 rupees per card to the special children, and the card that they make, we go for fund drive, and that's how we collect money and we use it for their own welfare. And also, the 13 members from the Nagaland, because it's quite far, all of us, take the flight. Okay, so the 12 members which are coming even this evening, they are coming by flight only. So through that generation of fund by selling the cards, we could take the flight. Uh, yes, so as I've said, the participation for the Parivaar, I think this is the highest number of participation from Northeast, and we are looking forward more of participation in the days to come. Through the initiative of the Northeast Zone, the Vice President and Secretary, we have three organizations which took the lifetime membership. One is the Nagaland Parents Association for the Disabled. The other is Arunachal Pradesh Parents Association for the Disabled, and one society, it's called Spastic Society of Mizoram. So they also took the lifetime membership, and we are also looking forward to have more membership. So that's it for now. Thank you. Thank you so much, Jameer ji. He is working very hard, and we know that last time also he has visited more than 3,000 kilometers and trying to make the Parivaar presence strong in the Northeast. So now I request Abhay Dubey ji, Central Zone. आप सभी लोगों को हमारी ओर से नमस्कार। मैं सेंट्रल जोन में 3 स्टेट को कवर करता हूं। एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे कम संख्या हमारी है, जो कि 5 ही केवल उसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। राजस्थान में करीबन 14 हैं और मध्य प्रदेश में भी 14 हैं, 14-15 के आसपास ही हैं। इस तरह से हमारा पूरा जोन का काम है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो हमारे मध्य प्रदेश में करते हैं वो हमारे प्रिय मारू जी हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करके आपके सामने आपके लिए प्रैक्टिकली उन्होंने बताया है। फिर दूसरा है हमारे राजस्थान से सुधीर जी, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने भी आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं की हैं और जो परिवार और पेरेंट्स और बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत काम जो है काबिल तारीफ़ है। और आगे की जो डिटेल्स हैं उस बारे में हमारे जोनल सचिव हैं अनुराग जी, वो बताएंगे आपको। धन्यवाद। धन्यवाद अभय जी। Annual report summary Central Zone, which as Abhay ji also already said, there are 3 states. The Central Zone successfully strengthened the parent organization network, focusing on awareness, advocacy and capacity.
building for ID, CP, ISD, and MDs. Key activities included community rehabilitation and improving access to essential government schemes, Niramya legal guardianship. Spotlight on key member organization. First is Approach Autism, where I belong to. Approach Autism Society drove awareness and employment via digital model. The Sunday webinar series reached over 2,500 beneficiaries. I believe many of here present are part of, might have attended one of my webinars. And there are some resource persons who are already on the desk who have given their empowered their knowledge and to the people, and sometimes the capacity crossed more than 100. 19% with disabilities were employed, 12 directly by Approach Autism Society. That means those who are working as a student, they are getting honorarium, and 7 through digital employment program. And I believe Astosh Kar from Jamshedpur will soon start getting some honorarium. He is also already present here. The digital employment success story includes one individual who transitioned from telecaller to leading a creative aggregator who called every person in Central Zone for their report, annual report. He is based at Bangalore. So we have all language person like Tamil, Telugu, Malayalam, and Marathi, Gujarati, Rajasthani, and Punjabi also. Now next organization is Bhilai organization, Sneh Sampada Vidyalay. The Vidyalay focused on holistic development. Key activities include new classroom, inauguration in February 2025, comprehensive examinations and report card, and multiple health camps, homeopathic, Ayurvedic for beneficiary wellness. Third organization is Nishakt Vyakti Abhivavak Sangh, Jabalpur. Abhay belongs to that organization. NVS operates the Prerna Special Education School, Damoh. Now he has opened in Damoh also, day center, and Prayas Vocational Niramya Vocational Training Center, Jabalpur, serving over 76 students. They successfully implemented the Niramya Health Insurance Scheme and the CBM Livelihood Project. Annual turnover reached to 1.36 million. That means 13.6 lakh. Fourth is Sarthi Lagdar Foundation, Ratlam. The foundation excelled in advocacy and financial inclusion in 2024-25. Niramya inclusion, 207 individuals enrolled, 350 claims processed. Livelihood, vocational sales total 1.7 lakhs in 2024-25, and 20,000 internal and 1.5 lakh student sales. That means students have those who have sold the items. Advocacy, that is wonderful idea. Otherwise, advocacy secured 35 PWD, social security, pension, and 7 legal guardianship. Training, conducted parent training for 23 parents and counseled for 84 parents. 2 staff received CBID training. Daycare, registered 43% with intellectual disabilities. Now I'll turn up to Sneh Nagda. Sneh Nagda report for 24-25 highlights a focus on community outreach, capacity building, and essential disability support services. Sneh Nagda's report to 24-25 highlights a massive focus on government scheme access, financial aid, and assistive device distribution, reaching 766 total beneficiaries with a total financial impact of rupees 3.4 million. That means 34 lakh rupees. Financial aid scheme secured 4.7 lakh in grants from MLA fund. So someone was asking in the morning about MLA fund, how to use it. That can be copied. That this thing can be copied from Sneh Nagda. 94 beneficiaries were there for MLA fund. Registered 258 for Niramya health insurance and successfully
processed 64 claims totaling for 8.7 lakhs, initiated pension for 30 individuals, aids and appliances, distributed devices, and under ADIP scheme, 65 beneficiaries, mobility and auditory support. Advocacy and outreach, identified 28 new PWDs and assisted 82 with disabilities and railway concessions. Technology integration and enhanced empowerment. The zone emphasized digital tools for efficiency, like AI Sensi stream the WhatsApp communication, customized WhatsApp communication. Tag Mango provides specialized coaching module, and the digital employment program empowered computer literate individuals for remote roles for fostering economic independence. Thank you. So, thank you so much. Now, any other vice president? She's not. Okay. Okay. Yes. Yes. Others, vice president or the joint secretaries, if the report is not readily available, you can write down, share with us on the email also. But please do share, because that will be compiled and taken into the annual report. Yeah. धड़कन तो पास में ही है, कोई नहीं. Namaste. नमस्कार. Okay. हम केरला में नमस्ते बोलते हैं. Okay. So no problem. It is both same only. South zone includes 3 states, that is Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. The vice president of South zone, Mr. Victor, has not come. He is from Chennai. So I don't have a compiled report of all these 3 states. ये तीनों states का report मेरे पास नहीं है. However, मैं केरल का जो रिपोर्ट है वो आपको बता देता हूँ. और सुबह मेरे वितर सर ने कर्नाटका का भी पार्ट रिपोर्ट दे चुका है. अच्छा, first let me come to the activism. We have kept a dharna in front of all the district headquarter offices in February 2024. The demand was that the disability pension was pending for more than 6 months. The Ashwasa Kiranam allowance, which is given to the caregiver, was also pending more than 10 months. And there was a reluctance in the case of panchayats, that is local self-governments, in giving the scholarship in full. So we have conducted this dharna in all the districts of Kerala, in all 14 districts, and it was a big success. We have met the government officials, and we have given this requirement. Not only the government officials, it has been given wide coverage in the newspapers, and the people of the society, not members of Parivaar, but other renowned people like advocates and chartered accountants, they were all invited to address this issue. The government has taken action. I am happy to say, and why we have taken this action in February was because the next financial year is going to start in March, rather April. So before that, the government should include in their budgeting. So now I can say that the pension has been given in full, not in one go, but in 3-4 installments. Now we are up to date. All the pending pension has been given by the government. Also, the Ashwasa Kiranam, which was pending for more than 10 months, that is 600 rupees per month. So that also they are given in 2 installments. And happy to say that the Kerala government has increased the pension from 1,600 to 2,000 per month. From this month onwards, it is being paid. So this was the result of activism which we have taken up. And
There are other requirements which we have projected. They that for giving the pension, there is a income ceiling of 1 lakh. So we requested the government, rather given a memorandum saying that for the ID persons, the pension should be given without considering the income ceiling. We have got a good reply for that, not considered. Okay, we have not got it, but we'll keep on trying for it further. That is one thing. And in the month of November last year, we have conducted a 3 days seminar convention at a place known as in Trivandrum, only very near to Trivandrum, in a medical college in NIMS. So the medical college has given us a lot of support in the way of infrastructure and various other things. The first day was an awareness for the parents of the various districts. And the second day, it was an interaction with the government officials. When I say government officials, state government headquarters is at Trivandrum only. We have invited the head of the departments of social justice, of Kudumbasri, of planning, and even from the medical departments. So we have had a discussion with them what we look forward, what is our requirement. Not immediately, maybe by about 2030, where Kerala should reach in the disability sector. So we have given a lot of points which is the government officials have noted down, and I am told a lot of things are being acted upon. Okay, and after that in Kerala we have got BUDS schools. That is in each panchayat we have got schools for the intellectually challenged. So now we are telling we don't require schools because it is going to be inclusive education. So we wanted to upgrade all of them to BUDS rehabilitation center. Okay, so now that also action is being taken. That there are a lot of PWIDs who are about 20 years or so. So they require not the education, they require vocational training. So this has been also going on in a slow process. It is not immediate, but one by one it is being done. But now new concept we have come up, it is not only BRC, we want BVRC, that is BUDS Vocational Rehabilitation Center. That plan also is going on, and I am happy to say that in the last year there are 2 places where BUDS Rehabilitation Center has been opened. One is at Kottayam and another one is at Trichure, Velur Panchayat. And regarding the National Trust, there is one Panchayat in Trichure which has got all 100% PWD IDs who has got legal guardianship certificate. So we are carrying out camps, and of course Calicut has taken the lead. About 2 years back they have done it. Now Trichure also one of the Panchayat is doing it. So we are more to the advocacy level, because I think in Kerala the parents are not looking for awareness, because most of the people are getting all the information through WhatsApp and various other sources. So awareness, we have shifted slightly to advocacy and more action. Okay, that's what we have done. And for this month only, we had 2 days session at Kila. You know, all of you know Kila, where we have conducted the National Parents Meet in 23. So we had 2 days session there where it was known as TOT, training of trainers. So the government officials from the Kila, they have taken classes. Also the Chief Disability Commissioner had come, then planning board members have come, and they have in fact guided us. We told them how we have to plan and how we have to project. And that point, that classes have been given to the Parivaar leaders, that is the junior leadership who are coming up. So this is another activity which we have done. I am not going to get into various other activities of the panchayats and various other districts for want of time. Thank you so much. Some points I may have left out. I request Sri Vishwanathan to come and add up. Excuse me, sir. Let me tell the house. In fact, for tomorrow's program, because VVIPs are coming, we have to hand over this hall to the security. Already security people are outside. So I request, we have to do the things quickly now. They called me and they want the hall, and we have to perform our very important thing, which is a conduct of the election things. So if you want, you please quickly complete. If you can write down and send us, because I will give you 2 minutes. Within 2 minutes you finish it.
because we have to Good evening to all. Welcome and Namaskaram in Malayalam. Okay. Just 2 minutes because I am not going in detail about our advocacy and our activities. We had a discussion last 2 days among senior leaders just about some organizational setup. I will read out within 2 minutes and hand over. From the inception of NCPO, parents representatives from Kerala led by Parivaar Kerala, the state federation, have actively participated in all matters of the national organization. We felt profoundly proud in the achievements of our national organization, but at the same time felt sad whenever there was a journey downhill. We believe that NCPO is set to become federal in its setup. We must always remember that NCPO rests on the pillars of organization down under. It is not autonomous. The NCPO has to take the state federation into confidence and shall give proper weightage to the state apex bodies. A strong state federation can promote and nurture organizations at district levels, and at the latter can promote units at Grama Panchayat, municipal and corporation levels. Moreover, in this type of structure, the state federation can collect affiliation fees from all the district organizations and remit the same to the NCPO. When the structure becomes full-fledged, there will be no paucity of funds as small streams make big rivers. Self-assessment once in a while will do good to see where we stand. Do you think that the AGM still holds the holistic and inclusive atmosphere it had in the past? Is there a steady decline in the attendance of AGMs? What is the present position of membership of parents' organizations? What steps have been taken to increase membership of parents' organizations? How many organizations have been formed in the last 3 years? What are the steps taken in the matter? Do we have any mechanism to understand and address the real issues of the PWIDD families, especially in the rural areas? Parivaar Kerala is also of the opinion that there shall be an effective shift from institution-based approach to parents-based approach. The central government has been withdrawing the support given to PWD families by way of concession under Section 80DD, GST concerned vehicle purchased by PWD, etc. Issues like Niramaya claim settlement hurdles, amendment to the National Trust Act, bringing to light the National Disability Policy, etc. still remain. Back to NCPO, we have not been able to get the amendments to our bylaw proposed and approved by Central Council, General Council 5 years ago registered. Thank you all. That's all. Thank you so much. Please. Thank you. So now I think we are handing over this dais to our returning officer for the process of election, and I request our returning officer, Commander Bijur sir, to take over the next point. So this is the year 2025 when we are conducting election for 25-28, 3 years tenure. Constitution which we have today, which is signed by the charity commissioner, and the constitution says that the election for EC will be there if there are more than 25 members who have stood for the election, because 25 elected members in the EC are to be present. The second part it says is there will be an election for president if there is more than one candidate. Correct. So I'll first Executive Council. In Executive Council we received 26 from 17 states.
And out of these 26 nominations, there was one nomination where the candidate was in the third term, so that candidate withdrew her nomination. And one more nomination where the nominating organization had defaulted since last 10-15 years, rather 15 years. So again, that candidate was not accepted. In fact, that was the sole candidate from Andhra Pradesh. So therefore, we are left with 24 total valid nominations. Now 24 valid nominations from 16 states. Now there is another stipulation in the constitution that among the elected candidates, there should not be more than 2 persons from any state. Now someone had mentioned that there was a stipulation which was taken up last year that we'll have the second candidate should be a lady candidate, but that's not there in the constitution. So we are not following that. However, there are 2 states, rather there were 3 states where there were more than 2 members. And if there are more than 2 members who are there in the election, in that case, if the state has got federation, the federation would decide which 2 members will remain in the contest. And if there are no federations, then the members who are present in AGM from that state, they will decide which 2 members in the contest. Now in the 3 states were Kerala. Now Kerala Federation has given me by email their choice of 2 members. And the second federation was from Gujarat. Gujarat has given me on email which 2 members they want to select for election. However, the third state is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh doesn't have a state federation. It has got 3 members here in my list. So first and foremost, Madhya Pradesh members must decide which 2 members should be there for the election. I'll read out the name of those 3 persons. One is Mahesh Chandra Rathore. He is from Sneh Parent Organization, Sneh Parent Association. Second one is Jayant Chandolikar from Madhya Pradesh, Indore Society for Mentally Challenged. And the third one is Aditya Tiwari from Nishakt Vyakti Abhivavak Foundation organization. So who all are the members here present from Madhya Pradesh? Kindly raise your hands. So I would request that all of you please go in a huddle and tell me which 2 candidates you want them to be here. Otherwise, I'll have to ask you in the open. Okay. Yeah, all of you should come in a huddle and then give me the. Yeah, Bahad. Any other member from Madhya Pradesh? Yeah, you please also proceed. There cannot be 2 members from an organization. Hello. उनको बोलिए, I think. Now I'll give you by the time they decide. It's a slightly complex decision for them because they have been at it for last almost 15 days. I have been after them. नहीं जा सकते आप तो गुजरात से हो अभी आप नहीं जा सकते सर otherwise this election game has been very exciting, at least during my time. The first election in Parivaar was held in 2016 in Jalandhar in Lovely University, where it was nothing less than a BJP versus Congress, whatever we can say. I don't know who was from what, but there were 3 candidates,
and each candidate, first of all, almost 15 days before, everyone started saying to each other that tum baith jao, you are not capable enough to be the president and all. And after that, two of them got after me to sit down. And finally, we had on the election day, we had an election, and again everyone was canvassing for each other. Yeah, it was what an election. Yeah. Yes, yes. So there I got elected in 2016. Then, funnily, in 2019, the next election, the person who had promoted me, who had nominated me, and who was my chief campaigner, was the one who stood against me. So it was like absolute like a political election. And that happened in Gujarat, in near Ahmedabad. We had an NPM there. And I think that was the best NPM we had. In fact, those NPMs we used to have almost more than 150 or 200 members coming here. Only because there used to be election. So now we are losing, kind of missing that fun. Yes. सर आपने बहुत पीसफुली कंडक्ट कर लिया एज इलेक्शन कमीशन आपके उसमें कुछ मतलब क्या हुआ ड्रामेटिक एब्सोल्युटली बहुत बहुत यूज जा रहा है मसाला नहीं है बिना मसाले के फीकी चाय है Anyway, we hope that by next year, next election, because next election, Pankaj ji or whoever completes 2 tenure, he cannot stand. Because a president can stand for only 2 consecutive tenures. So I hope there will be some action in the next. No, those who see. Yes, correct. We want Mahila Shakti to come in. I will canvass for any Mahila candidate after 3 years. I will canvass for the Mahila candidate. और उस टाइम इलेक्शन होना जरूरी है. Yes. Or in the next election, I will not be a returning officer. Yes. In the next election, I will not be a returning officer. I will be a chief campaigner. सर आप बच जाइएगा. नहीं तो महिला शक्ति अगर लड़े लगी ना. Yes. दो हो गई तो बस इतना होना चाहिए, 2 महिलाएं ना लड़े. बहुत मुश्किल हो जाएगा. महिला शक्ति आपस में डिसाइड कर ले. नहीं, वो आपस में कभी आप डिसाइड नहीं कर सकते. आई हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस. And then, but I have not given you my full experience. 2016 when I won the election, and when I went out during lunch time, I got a call from, अभी तो मैं कह सकता हूँ, Mr. Gadkari. He told me, when are you vacating Bangalore's office? So I said, sir, give me at least end of this year. I think it was held in October. So he said, no, within 15 days you vacate the office and take it wherever you want to take it. So that is the kind of situation where I had taken over. But it went on very well. After that, the first and आप क्यों गए थे? Yes. ए आपका भाड़ी गलत हो जाएगा. देखिए वो गए थे. गुजरात वाले जाके बीच में ब्रंग में भंग डाल के आ गए. होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वहाँ गुजरात से है, इसलिए हमें प्राइम काम करने पड़े. yes, sir. Give me the names, please. आप ही बताइए ना. Actually, all 3 have got their candidates. Who sir lost their candidate, वो please खड़े होके बता दीजिए. That is the way it is always done. Thank you very much. Yeah. So we have Aditya Tiwari and Mahesh Chandra Rathore. Mahesh Chandra Rathore is from Sneh Parent Association, and Aditya Tiwari is from अभी election की बात करेंगे. He is from Nishakt Vyakti Abhinav. Now I'll name each person who are going to be declared as elected. I would request that the person, if he is present, please come here and you all must clap. You have to put your hands together. नहीं तो वो बाद में आपका फंड्स वगैरह जो सब्सक्रिप्शन है वो कलेक्ट नहीं करेंगे. अभी तालियां बजाएंगे तो कुछ काम करेंगे. Okay. The first is Satish Ramchandra Dhurat from Jagruti Palak Samstha, Maharashtra. He is not here. His father
in a critical state. The second one is Dr. Chirag Upadhyay from Gujarat Sadhana Parent Association. Come. Yeah, please face them. The third one is Amanpreet Kaur. नहीं आप खड़े रहिए इधर ना, आप खड़े रहिए. बाद में हम सबसे और ताली बजवाएंगे. Amanpreet Kaur from Punjab. She also could not come because there was a marriage in her family. The next one is Aditya Tiwari from Madhya Pradesh. Please come. Then the next one is Madhvi Gupta from Delhi. Please come in. One of the very energetic ladies. And then we have equally energetic. Come together to make a very dignified life of our children. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं कि हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं. राष्ट्र, ओह यस प्लीज. और इसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके साथ हम आज की इस एजीएम को समाप्त करेंगे. बहुत अच्छे से रिटर्निंग ऑफिसर ने ये जिम्मेदारी का निर्वहन किया. लेकिन सबसे कम उनको झेलना पड़ा. या पिछले रिटर्निंग ऑफिसर का हालत कलर भगवा है सर. इतना सूट कर रहा है. हाँ यस परफेक्ट. कम ऑन. सो एक और आ रही है बड़े दिमाग. क्या एक और आ रही है जोधपुर से आती है ये संपत जी. मैं आ रहा दो तीन लोगों ने आपको. अच्छा अभी आपको मैं एक और सीक्रेट चीज बताता हूँ. मैंने ये प्रेसिडेंट बने हैं तो मैं पास्ट प्रेसिडेंट रह गया. मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट. आई कंटिन्यू टू बी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट. यस यस वेरी गुड. दिवाकर भाई शाह. थैंक यू मेजर सर. आप आइए यहाँ. विश्वनाथन जी के लिए इसने लिखा है, अनिरुद्ध मनोहर नहीं लिखा है. आपके देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ फाइनेंशियल से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. और हमारे दिवाकर भाई शाह के नेतृत्व में एज ए ट्रेजरर हम बहुत आगे बढ़े हैं. सो सर प्लीज प्लीज आइए प्लीज. आ गया. संपत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये जिम्मेदारियां आपने हमारे सिर पे रखी. थैंक यू. पगड़ी मीन्स जिम्मेदारी. थैंक यू सो मच. ऑल द वे मतलब जोधपुर से लेके आए हैं संपत जी संभाल के कायदे से. मतलब एक तो बांधने का तो एक अलग सिस्टम होता है कि अगर बांधने वाले हो तो बांध देते हैं, लेकिन बॉल के अंदर में लपेट के लाना तो मतलब कैरी करना है और वो भी साइज की. बट प्लीज मुझे वो अंदर जो होता है ना बॉल वो दे देना. अब है स्टिल मेंटेनिंग दैट बॉल. सो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. हम लोग राष्ट्रगान करेंगे. सब लोग सावधान की मुद्रा में आ जाए. राष्ट्रगान शुरू कर. भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग.
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय थैंक यू वंदे वंदे जय परिवार जय परिवार